Tridib Chatterjee is attached to Raheja Hospital. Then he is attached to Sushrusha Hospital. So there are many times big hospitals which are not where the patient is not very affording. So Sushrusha Hospital becomes one of those very good places. And for some of us who are very close, he is also attached to Lions Medical Center. So he is practicing in Mahim, and mornings he is there in his clinic, evening he practices OPD in Sushrusha Hospital. So he is one person who is ever contactable, reachable. I'm very happy. I'm very glad and to be associated with him, and we are all very happy to have him. He will be talking about asthma. See, now this is a friendly kind of a CME. It's not a CME type. So what happens is, if you feel the need, okay, somewhere we need to clear some clarity, please don't hesitate to ask. Please welcome Dr. Tridib Chatterjee. Thank you, Sanjeev. हेलो जाएगा ये इसमें YouTube पे जा रहा है. अच्छा, okay. Thank you, Sanjeev, for the kind words, and it is entirely of him and Sipla for doing this. I was just interested in talking and a topic like asthma, and I'll just maybe overlap a little bit of COPD also, which will be just similar, but let's start with the asthma. So dama, asthma, ये sort of words which everybody is afraid. मेरे को दमा तो बीमारी नहीं है, दमे का बीमारी है कि नहीं? अरे बाप रे, as if it's some life sentence and भाई खत्म can. So it's nothing like that. Basically, asthma is an inflammatory disease. पहले समझ लो it's a airways. ये जो airways है, this is the normal airways. They get inflamed, and inflamed होने के बाद they produce variety of symptoms. किसी को cough होता है, किसी को wheezing होता है, किसी shortness of breath होता है, fatiguability, and typically asthma जो है ना, it will not be the same all the time. You will have variability in symptom. You will have patient of asthma जो सर मेरे को इतना 2-3 साल से कुछ नहीं था सर, ये तो बहुत 5 साल पहले मेरे को हुआ था, फिर 5 साल मेरे को कोई तकलीफ नहीं, अभी मेरे को आ गया. That is exactly what is going to happen. A COPD will not behave like this. There will be always कुछ ना कुछ कम ज्यादा. So variability in symptoms, varied symptoms, and even not just symptoms but severity of symptoms. कभी हल्का लग सकता है, next month that asthma attack could be little more. कहीं वो pollution में गया, कहीं atmospheric कुछ भी हो गया, trigger हो गया. So it varies, and when you measure the lung functions, there also there will be a variation in obstruction. So this is how GINA is defined asthma. To be precise, inflammation of the airways, varied symptoms, cough, chest tightness, etc., which fluctuate in severity over time with variable expiration over the years. Expiratory flow, but the PFT may be normal when you do it in the normal state, and 2 दिन के बाद attack आया तो you see a severe obstruction. So asthma, by and large, there are various phenotypes. The commonest is the T2 type. That is the T2 say that is the allergic phenotype. तो उसमें strongly family history रहता है. Not necessarily asthma, skin rash, rhinitis. खानदान में 2-3 जन को रह सकता है. Father, mother, sister, like that. So that is the 50-60% of asthma attack. But everybody is not family. It can be of non-family, non-T2 type. Typically seen in smokers sometimes. Then obese. Obesity, remember, is a very, very major complication, cause of asthma. More so in females. आप लोग को बहुत आपका पेशेंट्स आए होंगे 40-50 साल की फैटिश लेडी, फर्स्ट टाइम अटैक. Think you might have seen. So that obesity itself is a major. In a city like Bombay, where there is so many pollution, so much other thing. So this obesity becomes another type. Then there is one asthma, which is a cough variant, where patient only has dry cough. And आप X-ray करो, ये करो, दुनिया भर का this करो, you don't get it, and you can pick it up on a PFT or some complicated test, and it responds to asthma treatment. So cough variant asthma,
सर्टेन ड्रग्स लेने के बाद हो सकता है. बीटा ब्लॉकर्स, स्पेशली ओल्ड टाइम बीटा ब्लॉकर्स जो लेते हो, एटेनोल और इवन मेटोप्रोनॉल, दोस्त, एस्पिरिन लेने के बाद एस्पिरिन अस्थमा यूजुअली सीन, जिसको नेजल पॉलिप होता है. Or even other NSAIDs, if they're used very chronically, they can lead to. That could be one of the phenotype which causes asthma. And there is other COPD asthma overlap. Symptoms are what? Usually cough, wheezing, रात को उठता है, खांसी आता है, audible wheeze रहता है. Along that there will be fever. And generally what are the triggers? Fevers, viral fevers, pollution, your indoor, see they are divided into indoor and outdoor. Indoor के अंदर आप अगरबत्ती, please understand, अगरबत्ती is a very major stimulant. So please tell your patients जिसको अगरबत्ती अस्थमा है, भाई ये अगरबत्ती बंद करो, इलेक्ट्रिक लगाओ, पूजा करो, but with electric things. Similarly, dogs, cats, some people are very fond, they are very strong allergens. To avoid very strong perfumes, scents, these kind of things. And outdoor, of course, is pollution, gases, fumes, plants, certain plants. These are the which trigger. So, आपका, and it's a genetic. I बोला ना, तो it's a your airways are hyper response. So आपको, so you have a tendency of getting. ये होने के बाद आप इनको शायद खाली खांसी होएगा और आपको अस्थमा आएगा. Because you have that genetic, the gene which is causing in the T2 type, which is the majority of the types. So how do you, once you have this patient, अभी आपको लगता है कि अस्थमा है, so how do you diagnose it? So traditionally, of course, after investigating, you'll do blood count, CBC, IG levels करोगे. But specifically for asthma, you'll do a lung function test. And if you don't even have a lung function test, you must have this. आपके पास क्लिनिक में ये आपके, this is called a peak flow meter. This is the basic screening test each and everyone should have in your clinic. Each and every one of you must have this. So इसमें क्या करना है कि you just करके flow full. So I'll show you. This you make it till 0. Here. 450. So average 400, average made it. So if patient does, suppose done, the makeup patient ने 200 किया, अरे बहुत कम किया, you give him a 1 puff in your clinic, 20 minute wait कराया, you will see it is gone up to 400. No, just plain salbutamol. When you check it, you always check it with SABAs, that I will be telling you. Short-acting beta agonist. Acetylene, I think, or Livolin. Livolin. Preferably use Livolin. Acetylene is more toxic. So if it has increased by about 50%, आपका asthma का diagnosis kind of हो गया है. Of course, you will send for PFT, no doubt. But आप just one instrument has given your diagnosis. After your clinical diagnosis, जब wheezing लगा, ये किया, अरे अस्थमा जैसा हो गया लगता है, then you confirm it. Confirming, you do a spirometry, you have to show good lung function, where you do an FEV1. FEV1 is, देखो, lung function में what spirometry is done is, you start breathing from, so if the graph is there, this is the expiratory curve, the graph. तो उसका जो first सेकंड में जो निकलते, दैट इज कॉल्ड FEV1, एंड तक आएगा, दैट इज द फोर्स वाइटल कैपेसिटी. सो द FEV1, इंडियन प्रेडिक्टेड नॉर्म्स आर देयर, हाइट, वेट, एज, सेक्स, बाय डॉक्टर छाबरा. डॉक्टर छाबरा इज इन दिल्ली, ही हैज मेड इंडियन नॉर्म्स. पहले वी यूज्ड टू, इन माय टाइम वी यूज्ड टू फॉलो फॉरेनर्स का, व्हिच वर मोर, सो वी यूज्ड टू मिसडायग्नोज, एवरीबॉडी वाज टू बी कंसीडर्ड एस्थमेटिक. सो नहीं, उनका लंग कैपेसिटी ज्यादा है, सो वी हैव मेड इंडियन नॉर्म्स. They are there everywhere, so you will know it is less. Then you give the same inhaler. If the FEV1 increases by 200 ml,
or 12%, then this confirms asthma. But please understand, as he said, Sanjeev said, I want to keep it at your level. You can diagnose and then confirm it, but you can diagnose it at your clinic with this. Out of this, after my talk, I hope कुछ नहीं तो सब लोग एक ये ले सकते हैं. Even in cough patients, even in If you are feeling the patient और कोई reason नहीं है, then it is, as I said, cough variant asthma. You do this, and then you feel that you give a course of inhale corticosteroid, which I will talk now, and you will see a tremendous benefit. Do not hesitate to tell उनको asthma है. आपको पहले सबसे पहले आपको पेशेंट को, आपका पेशेंट है अस्थमा है तो क्या हुआ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. नहीं वो ठीक नहीं होता आपको, यू हैव टू टेल मी नाइस मैनर, भाई ये क्रॉनिक डिजीज है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, ठीक वैसे रहेगा तो. डू यू नो, आई विल टेल यू द ट्रूथ, 70% of American presidents are asthmatic. There is a joke. तुमको अस्थमा नहीं है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट तुम नहीं बन सकते. सौरव गांगुली एस्थमेटिक, जॉन्टी रोड्स ग्रेटेस्ट फील्डिंग कोच, यू नो ही टेक्स इनहेलर्स. द लिस्ट इज एंडलेस. वो कौन सा हीरोइन, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन. सो क्या कुछ नहीं, कहां लेवल पे पहुंचे. सो इट्स इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड डायग्नोसिस. यू नॉट टेलिंग भाई तुमको स्टेज 4 कैंसर है, तुम्हारे 6 महीने रह गए. नथिंग. प्लीज, एंड पेशेंट को प्लीज कॉन्फिडेंस में लो कि भाई ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. ओके, सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर अबाउट द लंग फंक्शन. अच्छा, देयर आर सम. हाँ अगर नेबुलाइज करना है तो नेबुलाइज के लिए क्या क्राइटेरिया? नेबुलाइज के लिए if you don't have a spray, then use a nebulizer with Livolin Respuz रहता है इनका. बताता हूँ मैं, उनका नेबुलाइजर रहेगा. नेबुलाइजर नहीं तो these things are available as devices. एक्चुअली बाद में बात करने का था, बट कोई बात नहीं. You use the nebulizer. Most of you will be having nebulizer. Think what you see. In asthma, there are 3 types of basic inhalers: inhaled corticosteroids, ICS, that's short form, LABA, long-acting beta agonist, SABA, short-acting beta agonist, and once in a while we use LAMA, long-acting muscarinic antagonist. मैं इस सबको थोड़ा डोंट गेट कंफ्यूज, सबको बोलेंगे जरा. तो इसमें से द शॉर्ट एक्टिंग वन इज सैल्बुटामोल और एस्थेलिन, जो स्प्रे मिलता है. तो एस्थेलिन नाउअडेज वी आर यूजिंग लीवो एस्थेलिन, व्हिच इज द लीवोमोर फॉर्म ऑफ इट, व्हिच एक्ट्स फास्टेस्ट. सो दैट इज व्हाट यू यूज टू सी द वेरिएबिलिटी. आपने जो पूछा ना कौन सा लेना चाहिए, यूज दैट. यू कैन यूज इट एज स्प्रे, यू कैन यूज इट एज dry powder inhaler, or you can use it in a form of inhaler. And wait 15 minutes. Don't do it immediately. 15 minute time though, and then you repeat. If you have some to demonstrated the this I think disposable रहता है. Disposable ये तो आपका ठीक रहेगा, ये फेंक देने का. This is, I think they call it breathometer. This is actually called a peak flow meter. मैं आपको इतना बोल रहा हूं, once patient has got asthma, they must purchase this. They must maintain record at their house. Daily कैसा चल रहा है, सुबह शाम. You over a month, पहला 15 दिन 200, 250, 15 दिन के बाद 300, 350. End of the month they will come with report 400, 450. Like what I did. You know is better. आपको PFT रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज गिवन यू. आई थिंक इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 500 रुपीज, और ये डिस्पोजेबल वो दे देगा उस साथ में. तो ये नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, ऑल योर पेशेंट्स ऑफ एस्थमा शुड गो होम, और ऑल्सो शुड गो विद दिस. एंड एक चार्ट रखने का, डेट एंड वेरिएशन देखने का. सपोज somebody is getting the night, that means the night inhaler dose can be increased. He's getting early morning problem, the light ka dose thoda you give a little high, 2 puffs, so
dip for acrylic. So this is a phenomenally useful device. 500 rupees आप diagnose कर रहे हो, आपको patient को दे रहे हो for follow up and treatment. So remember this. This हो गया ये. हाँ, but I must also tell you, all that wheezes is not asthma. So सबको don't be in a first confirm it. So foreign body, children, especially children. Remember foreign body. You will hear a one-sided wheeze most of the times. It could be just acute bronchitis, which will disappear with treatment. In case of adults, it will be COPD. It could be bronchiectasis. In adults, cardiac failure. Again, patient will be breathless. Patient may have bronchi also. You may not be able to breathe. So always, if you feel there is doubt, tachycardia is there, do an ECG, do a cardiac enzyme. Keep that as a differential. Because आप खाली फिर उसको inhaler दोगे, patient is not responding, and you say it's difficult to treat asthma. It's not. It's difficult to treat because you have missed the diagnosis. So keep this differential diagnosis in mind. Always ask for family history. As I have told you, thromboembolism occasionally, very rarely, but you have to keep acute breathlessness, chest pain, lot of tachycardia, chest में कुछ नहीं है, then thromboembolism. It becomes a differential. Asthma confirm करो clinically, and clinically confirm होने के बाद, then you do this, then a PFT, then you, if you can manage tika, or you can further send it. Now, once this asthma का जो पूरा, and before I tell further, I want to give you some very unfortunate statistics about India, which I heard today. I mean, बहुत दिन पहले सुना था, but I just heard this, which I will tell you. And this is why this lecture makes a lot of sense. And thanks, Sanjeev, for this. Out of the world, India has got about 40 million asthmatics. In this 40 million asthmatics, maximum deaths, maximum DALI means daily days of डेली लिविंग, मतलब स्कूल नहीं जा सका बच्चा, ऑफिस नहीं जा सका, काम पे नहीं जा सका, एंड मैक्सिमम डेथ्स आर इन इंडिया. सो आउट ऑफ 1000 asthmatic patients, about 500 die. As against this, European countries में 10 die. Okay? The main treatment of asthma is inhaled corticosteroid. So the statistics has shared that if you use one canister per month, one canister of, say, this one is Foracort, say you are using this one per month, it's 12 per year, then your death rate goes down by less than 10%, less than 90%. The less the canisters, more the deaths. There is an actual trials. ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये संदीप सालवी has carried out trials for this to show that. And so no, what they have roughly calculated is if you take 12 canisters and you multiply it by 34.5 million, then you should be able to sell about 400 canisters per month. You know how much is sold? 40. These are trials. Huh? So that is how poor we are in treating asthma. And we are to blame for this, not the patient. We have not taken the step to explain to the patient. Inhalers are the mainstay of treatment. Sir, but patients are getting Or well, theophylline and all, but main treatment of asthma, inhalers. In inhalers, the main treatment of, see that I don't want to go to theoretical track 1, track 2, because that will become complicated. But just remember, moral of the story is in asthma, the main drug is steroids. Inhaled corticosteroids, जिसको मैं ICS बोला था. इंडिया में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, बेक्लोमेथासोन, बुटाइड, फ्लूटिकाजोन, मोमेटाजोन, 4-5 molecules. They are roughly the same. 19-20 fluticasone is supposed to be a little better, but it tends to cause more pneumonia. Budesonide is safer but less potent. So
whatever it is steroid. Now, regarding your point, all the patients after taking the inhaler, they have to gargle and rinse. If you do that, 99% they will not get a problem. 1% they may get, but it will be 99%. वो भूलने का नहीं. That goes without whether it is inhaler or whether dry powder or any or nebulizer. You have to rinse. That is sure. So inhaler technique is the most important. So now I think this will come to devices only. So in the devices, various devices. So let's talk first of dry powder. Dry powder devices are basically what's called a rota cap. Nebulizer instrument. See, this is any rota cap of any company will be like this. There will be one transparent end and there will be one colored end. तो आपको जो transparent end है, जिधर आपको powder दिख रहा है, this is the medicine. This is to be put into the device. Now there are various devices. This is the old time rota cap where you put it, rotahela, sorry. Fill the end and you twist it. It's a better, newer one is revolver, where you put it here and just close it. Okay? Now, whether you put it out, there is another one which they don't have, there is a loop where you put it like this and दोनों बाजू से इसे दबाने का होता है पिन पंक्चर होता है. Then they also have got an accuheller which has got multiple doses. हाँ, सभी पंक्चर, but डेवलप पंक्चर होता है ना, एवरीवेयर फाइनली पंक्चर करने का हाउ विल यू गेट द, ये घुमा के करता है वो पिन से पंक्चर होता है. तो पिन से पंक्चर अगर ये है और एक लूपी हेलर है जो इनका नहीं है, दूसरा कंपनी का है, यूं ऐसा ढक्कन रहता है, ऐसा ट्विस्ट करेगा तो नीचे एक खड्डा रहेगा, खड्डा में कैप्सूल यू कीप इट लाइक दिस, क्लोज इट एंड दोनों बाजू में ऐसा दो नॉब रहेगा, ऐसा अभिषेक ब्रॉट इट, ऐसा ऐसे दो ऐसा दबाएगा ना साइड नॉब, पिंस विल गो एंड द पाउडर विल कम ऑन द जाली. नाउ however do technique, now they will all demonstrate, but I will tell you, then of course they will demonstrate. ये स्कैनर है, यूट्यूब है, यू कांट से मेरे को मालूम नहीं कोई कौन सिखाएगा. नो एक्सक्यूज, देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल टू टीच यू. कंपनी विल टीच यू, यूट्यूब विल टीच यू, द स्कैनर विल टीच यू. सो एनीवे, देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू. इन ड्राई पाउडर जब भी लेते हो ना, नेवर इन लाइंग पोजिशन, सिटिंग पोजिशन और स्टैंडिंग पोजिशन, slightly head tilted upwards, hold in your mouth, not teeth. तो मैं टिपिकली पेशेंट को बोलता हूँ कि अरे भाई कैसा है, रॉन्ग, यू आर टू टॉक नाउ. सी can you make out what I said? Can't make out anything. I said मैं कैसा है, मैं कैसा है, useless. Just simple things I'm just telling you, just make sure that you hold it with the teeth. Then once you have done that, you have to take one short fast efforts. This is the dry powder or inhaler में difference. मतलब इधर ये डाल के आपने कर दिया, wait 1 minute more. So quick, fast. So that is why dry powder inhaler, जो old persons है, इनका कैपेसिटी नहीं है, उनको ये एडवाइजेबल नहीं है, because you require a pressure of 60 liters per minute. The PI, the peak inspirative flow has to be 60 liters. So this young, mobile, they can take this. Adult एकदम बुढ़ा 70 year old, वो उनको शायद कभी कभी है. So, but again it is not, it's hard and fast, you can't use it.
But generally the rule is not rule. The trend is कि अगर थोड़ा यंगस्टर या एडल्ट, नॉट 78 ईयर ओल्ड, जो तो उनको ये खींचने को तकलीफ होती है, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ लिटिल मोर इंस्पिरेटरी प्रेशर टू टेक. बाकी मेडिसिन इज द सेम, इफेक्ट इज द सेम, कोई कौन सा कोई बेटर नहीं है, दे आर ऑल द सेम. दिस इज एनीथिंग, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? गार्गलिंग करने का और 3-4 बार के बाद ये कैप्सूल को उठा के देख देने का. डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू यूज. इफ देयर आर each one is, if you are using in case of asthma, you can, latest one is they have got ultra, I'll tell you that those are molecules after only once a day, but generally average twice a day तो हम लोग यूज करते ही हैं. So twice a day use, कभी कभी वो to use a reliever medicine, तो बीच में एस्टेरिन भी यूज करते हैं. So इसके बारे में किसी को कुछ पूछने का about dry powder? So dry powder में I mean efficacy if you compare with the bronchodilator combination of like diclomethasone and fluticasone. So that's a combination of LAMA, ICS and LAMA. So the best ICS LAMA, which is supposedly is fluticasone with formoterol, or diclomethasone with formoterol. Formoterol is the best molecule, better than salmeterol. Formoterol propionate as fast, it acts quickly and is more safer. Next is salmeterol, but doesn't mean that somebody cannot use salmeterol. But formoterol is the most preferred. But it is then they have got vilanterol. Vilanterol is ultra LAMA, which means it works for 24 hours. आपका नाम क्या विलोर है ना? Voltido F. So that is a single dose inhaler. You put one puff today and next puff tomorrow. That is you can give in stable patients. Sometimes patients say नहीं हमको रात को भी लगता है. So I think when the initial stages, if patient is first time coming, there is not trials are not there, but I feel you should give it twice. Patient feels happy, रात को एक लेके सोएगा. मैक्सिमम कितने होते हैं? That is all depending. Now you start off with in mild asthma, which means if the in mild asthma मतलब if there are attacks less than 3 or 4 days a week, night waking once, then you start with low dose steroids. हाँ, okay. Before I say that, पहले के ज़माने में, before 1990s, 80 or 1980s, इन लोग को SOS inhaler देते थे. So that has been the latest GINA guidelines says that is extremely bad because they get severe attacks afterwards. So even आपको वो बोलता है कि मेरे को 3 महीने में एक बार होता है, still that patient has to take low dose steroid at least once a day. How many days? Forever. This is a chronic disease. ये बात आप समझ लो. How there is no time. It's not an AKT course of 9 months or a MDR of 2 years. So there is no remission time. Remission होने के बाद you will get a relapse. So remission, you come down on the dose. ये स्टीरॉइड का डोज कम कर दो. इंस्टेड ऑफ 100 milligrams, get 100 milligrams. But you can't stop it. If you stop it, then there is it is at the cost of the patients. आज नहीं, 3 साल के बाद बोलेगा हाँ मैं पहले लेता था. So after 3 years, that nobody can predict. इसका what is the pollution? This is a chronic disease. There is no cure. Cure as cure. ये आपको पेशेंट को, दिस इज वेयर एज अ फैमिली फिजिशियन आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा. So ये एडिक्टेड नहीं है, यही ट्रीटमेंट है. Not Deriphylline tablet daily for next 1 month or doxyphylline or any phylline. Treatment and steroids are the treatment. स्टेरॉइड्स का क्या रोल है? हाँ, अभी ओरल स्टेरॉइड अभी तक इनहेल पे आ रहा हूँ. 1 minute, आप जंप कर रहे हो. There is 0.1% absorption of this in the blood. 0.1% of this goes in the blood. And to call it, see, low dose steroids depends. If you are using more than 1600 of budesonide, each molecule has got a high dose.
I've written it down because मुझे याद नहीं रहता है खुद कोई. These average contain 200 milligrams budesonide. So twice a day is 400. It is a very small dose. It's like what is called as homeopathic dose. now देखो budesonide 200 to 400 is mild, is low dose, medium is 400, 800 to 1600. ये आपका 2%. वो पेशेंट आपके पास नहीं रहेगा. इसको 800 to 1600 will be with me, will not be with you. सर हमारे पास रखते हैं सर. You will have to send them and then come to you. Because that goes into step 5. There are 4 5 steps practically. So step 1 and step basically means inhale corticosteroid and rescue inhalers, SABA. Then step 2 and 3 and 4 are using medium to high dose of steroids with LABA. And then you, in addition to that, you use LAMA. I want 2 words about LAMA. LAMA is long-acting muscarinic antagonist. उसमें आप लोग जानते हो इस डुओलिन, that is ipratropium. उसके बाद आ गया टियाट्रोपियम, उसके बाद आ गया ग्लाइकोपायरेनियम, अभी आया यूनिक्लिनिडियम. यूनिक्लिन को निकाल दो, वो अभी क्वाइट एक्सपेंसिव है, उसको निकाल दो. We'll not discuss it only. But glycopyrronium is 25 microgram. It is available with them as inhaler, respules, capsules, rotacaps. So that is to be added to ICS. Do not use any asthma inhaler without steroids. Do not use only glycopyrronium. Do not use only formalin. Monotherapy. You have to have corticosteroids in that molecule. याद रखो, asthma is an inflammatory disease. So it goes with the same with the pediatrics where we Pediatrics also we normally go with the same. Pediatrics also they use the same steroids. They may use sometimes SABAs instead of LABAs, but they use SABAs. SABA means salbutamol. But steroids, because the child is growing, you try to keep the steroid to the minimum. Because that is where you are preventing. You want to say that bone growth, etc. So try to keep to steroid to minimum. But steroids have to be given. There is no way of steroids. Okay? So now ये हो गया. उसके बाद there are 2 types of inhalers. One is this inhaler, this traditional inhaler, and this is the synco breath. Now I just tell you, सब आपने देखा होगा. इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. शेक करने का है, मुंह में लेने का है, एंड इसमें डिफरेंस इज आफ्टर यू प्रेस. मैंने उसका क्या बोला, इधर सी द डिफरेंस, इधर or if required the second dose. Short, fast up, slow, fast up. Go to same level, hold, breathe out. ये लेने के लिए show me, give me a spacer. So उसको nasal breath क्या hold करना है क्या 1 to? हाँ, just you completely stop breathing. ये देखो, nothing, you are not breathing. Now, many times patient can't do this. So this is called a spacer. Always take a valve spacer. Can you see this valve? ये valve दिख रहा है? अभी ये देखो, ये valve मैं खींचेगा तो ही खुलेगा. देखो. You see this valve opening? It should open. It's not opening. आप लोगों को दिखा क्योंकि लोग कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे इसके. This valve has to open. It's not opening. वो क्या है थोड़ा सा नहीं, it actually
So it should be very, when you open the valve opens and the thing comes in and the thing in. इसमें advantage point is you put the inhaler here. तो आपका वो जो नहीं आता पेशेंट को दबा रहा है और बाद में खींच रहा है, पहले से खींच ले रहा है, सिंक्रनी नहीं है. So then you and then do then this. But then same. This is called spacer. ये स्पेसर को once a week धोने का है, 6 महीने के बाद फेंकने का है. जिंदगी भर के लिए नहीं है ये. It gets spoiled. Static electricity gets static, and then the particles don't come. Right? So this is called spacer. Valve spacer अलग-अलग साइज में मिलता है. Now और एक डिवाइस which they have got is the synco press. इसमें देखो, there is nothing to press on top. Okay, there is nothing. इधर देखो, इधर space, इधर कुछ नहीं है. So how to take it? 3 clicks. Here 3 clicks. Shake. Click 1. Click 1. Now, did you hear one noise? Did you hear a noise? Second click. Same. Hold. Leave. Third click. जब तक आप क्लोज नहीं करोगे ना, तो नेक्स्ट डोज वोंट कम. बताता हूं. फर्स्ट क्लिक, और मेरे को सेकंड टाइम नहीं, भूल गया लगाने का. दिस लोड्स द डोज. एंड याद रखना, all these inhalers come with a dose counter. Dose counter. सब आप इधर आके देखना है. संजीव टोल्ड usually 120, it will keep going backwards. 120, 110, 1 and लास्ट का जब 10 रहेगा, लाल में लिख के आएगा. Which means भाई हो गया तेरा अभी काम, नेक्स्ट लेने का टाइम हो गया. हाँ, this also comes with dose counter. This also dose counter. इसका आगे है. हाँ, ये दोनों हो गया. एंड द लास्ट इज द नेबुलाइजर. सी नेबुलाइजर्स बहुत टाइप का नेबुलाइजर आता है, बट आई थिंक यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द जेट नेबुलाइजर. दिस जेट नेबुलाइजर इलेक्ट्रिक में लगाने का रेस्पॉन्स नहीं है. अच्छा, इसका ये सेम है. ये मल्टी इन लोग बता देंगे. ये कॉस्ट सिंपल है. दिस गॉट मल्टीपल रोटर कैप्स इनटू इट. वो आपको एक में डालना पड़ता है ना. ये थोड़ा डीपीआई है, बट लिटिल इजियर. इट विल कॉस्टलियर. ही विल डेमोन्स्ट्रेट यू. आई हैवंट यूज्ड दिस मच, बट दिस इज आल्सो वेरी गुड. इट लिटिल मोर एक्सपेंसिव एट वन शॉट. इवेंचुअली कॉस्ट वाइज ये चीपर ही पड़ जाएगा, मगर एक शॉट में आपको खरीदना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा. बट इसमें क्या, कड़क, देन शाम को कड़क सेकंड डोज. सेम वो क्या, ये निकालो, वो डालो. सो अलग अलग पार्ट्स है, ये एक में हो जाते हैं. सो somebody can, but method of taking is the same, दवाई is the same, right? और ये नेबुलाइजर आई थिंक आप लोग यूज करते हैं ना बहुत बार. तो मैं खाली नेबुलाइजर में एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ. नहीं, वो आपका नहीं, और 120 डोज रहते हैं यूजुअली. 60 डोज. नहीं, एक मेरे को खाली नेबुलाइजर के बारे में आप लोग को बोलना है, विच आप लोग सब यूज कर रहे हो, बट आप लोग 90% मास्क यूज करते हो. बट एवरी नेबुलाइजर कम्स विद अ टी पीस. तो आप कॉमन नहीं तो पेशेंट को एक टी पीस खरीद के लाने को बोलो. अटैच इट टू इट एंड मेक हिम टेक इट. इट इज मच बेटर देन विद द मास्क. अगर पेशेंट टी पीस मतलब टी पीस, हाँ यही है. सो ये
ब्रर यहाँ से जा रहा है, इसका मुंह में लेके rather than this, ये मास्क लगा के आप which 90% of you will be doing this way, right? Instead of this, if you can do with that, वो as you said hygiene के बारे में either I could sterilize it और ये separate मिलता है, patient can just buy that and उसके लिए यूज कर सकते, या you get पर because many people buy nebulizers, घर पे रखते हैं. As he said, medicine has gone to the remember nebulizers with the solutions are much in higher concentration, so you have to be careful. Concentration in the nebulizers, the amount molecule is more higher, so this amount of steroid will be more, so don't be careful. It's not the same as in other. The concentration is more. Nebulizer, Sanjeev will say, once you put the Respul, you should always put a little bit of water, sterile water. और Respul इन लोग ने लाया नहीं, तुम्हें बता देता था. कोई बात नहीं. Respul आपको मालूम है ना, प्लास्टिक. सोल्यूशन क्या है? I think now this only गवर्नमेंट सेटअप में रखना है, बाकी प्रैक्टिस that पे नहीं, it's all not that way. मैं तो आपको बोलता हूँ आप लोग का पेशेंट्स, मैंने आपको बता, यहाँ तक मैंने किया है, पेशेंट डू और लॉन्ग स्टैंडिंग यूज करता है, या तो इनको बोलता हूँ सर डिस्काउंट में दे. मैं पेशेंट को दवा बाजार में से खरीदने को बोला है, दवा बाजार में से रेस्पूल्स खरीद के लेके आ, you get 20-30% discount. Go there one day morning, एक महीना का रेस्पूल का whichever you get cheaper. Point is, आपने कहा ना कितना दिन, तो this is so nebulizer you do not go as a first choice. Old person, handicapped person, हाथ शिवर करता है, वो सब इनहेलर पकड़ने, पार्किंसनिज्म, how do you going to take a, how do you think you going to take a nebulizer? दांत में इन्फ्लुएंस, दांत का प्रॉब्लम है, देन थोड़ा सा बुलक्कड़ टाइप का है, डिमेंटिया टाइप है, सो सच पीपल, ऑफकोर्स मैक्सिमम कंटेमिनेशन इससे होता है, स्प्रे होता है, बट नेबुलाइजर हैज इट्स लॉट ऑफ रोल. पेशेंट हॉस्पिटल पे जाते तो हम नेबुलाइजर देते हैं. एक्यूट अटैक में क्या होता है? नाउ कमिंग टू योर पॉइंट अबाउट स्टेरॉइड्स, इफ यू पेशेंट डू नॉट स्टिल बेनिफिट और saturation is low and he's got really serious spasm, then you can give a short course of oral corticosteroid. No hesitation in giving it. 20 milligrams, 30 milligrams, 5 to 7 days max. And stop it abruptly. You don't have to taper it. If you are giving, no. 10 milligram or 5 milligram TDS, 10 milligram BD for 5-7 days and stop it. If it's not still being better, then you have to find out the cause. There has to be some other cause for it. And asthma would definitely respond. Inhaler check karo, और कोई coordinate, gastrointestinal reflex, I forgot to tell you that. GERD, it's a very major thing, cause of repeated attacks of asthma. Allergic rhinitis, हाथ में चलता है. One airway, one disease. ये पार्ट और ये पार्ट आर जस्ट टू, एक ही एयरवे का दो भाग है. डोंट थिंक दैट ये और ये अलग है. मेनी टाइम्स यू रिक्वायर इंटरनेजल स्टेरॉइड. इनका तो डुओनेज स्प्रे है या फुटी का स्प्रे है, so spray. So they basically they're the same thing. You activate. And last is not to forget about leukotriene inhibitor, that is Montelukast. Montelukast, if you have proved, you can try it out. People have given for months together. But एक याद रखना, Montelukast का एक black box warning है. Especially children में दोगे, so they may become more restless. There has been known to have suicidal tendency. अगर आपको लगता है ये Montelukast देने के बाद ये बच्चे का स्कूल का परफॉर्मेंस कम हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, थोड़ा वो मिसबिहेव कर रहा है, it could be Montelukast. रेट में भी हो सकता है. में भी हो सकते हैं, but more common in children. Side effects are mentioned. I have never ever seen this side effect.
But the trend is they say that you give a Montelukast for 3 months and then give a break. Give him a break. This Michael is not given any textbook. This is what we discussed amongst ourselves. In the paper recently, they have put it in front of India. Yeah, it is. There is an American black box warning on this. It is proved that it causes these things. ये बात अलग है, हम लोग इधर हमने देखा नहीं है. बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट दे रहा हूँ कि बच्चे लोग का अगर स्कूल का परफॉर्म और एडिट इरिटेबल हो गया सडनली लगता है कि और कोई कारण नहीं है, then this could be one cause. You can just stop it and see. Montelukast is known to cause it. Montelukast generally you give it with some antihistaminic. Fexofenadine हो सकता है. आजकल the latest is bilastine, which you give 1 hour after food. Any role of Montelukast in allergic rhinitis? 100% yes. And local application. When you give nasal spray, एक चीज याद रखना. When you are giving nasal spray, any nasal spray, it is to be given. इधर नहीं हो उनके पास, बट मैं टेक्निक बता देता हूँ. ऐसा करेगा तो स्प्रे आता है. विक्स इनहेलर नहीं है, नहीं करने का. Everything will go in your throat. It is not Vicks inhaler. ऐसा किया, just one small inhalation. Just तो गया गले में. This problem इधर है, दवा इधर है. So allergic rhinitis when this ENT वाला उन लोग तो मैं करता हूँ, नहीं करता. That is very unfortunate. नहीं करता है तो it is very unfortunate then नहीं करता है. It is your duty to explain to patients inhaler. ए भाई सिप्ला का ये ले लो. नहीं, as he rightly said, as Sanjeev rightly said, आप लोग को अगर डाउट है, read the YouTube. Many times in my case, इनका और any company का, I make them deliver at home and I tell इन लोग को, ये courier service नहीं है. You are not Amazon का courier going and delivering inhaler. 15 मिनट उधर बैठ के समझाएगा तू नहीं समझा तो तेरा वाट लगने वाला है. ऐसे मस्ती करता है लोग, ये करता है लोग बेचारे लोग. जो के and last class, this last thing is, all asthma patients have to be vaccinated. Influenza vaccine and pneumococcal vaccine. All. Child, adult, Buddha. Influenza vaccine is every year changing. Flu vaccine, pneumo vaccine depends on the age. If it is more than 50-60, you give conjugated. That is Prevenar, or you can give the unconjugated ones if they are younger. But you have to vaccinate. One standard, one shot. And then you repeat after 5 years. Influenza every year. Pneumococcal. Influenza every year because strain changes. If you give pneumococcal after 65, then it's only once. But if it is before that, after that, flu guy, asthma guy could be 30 years old, na? Prevenar 13 you can repeat, but Prevenar Prevenar 30 is not to be repeated. 23. Prevenar 23 is the unconjugated. This Pneumovac, now there are other companies also come in. But Prevenar 13 is only one. I think now they are coming with Prevenar 15 or something they are coming. अभी तक आया नहीं हमारे. Influenza vaccines are in the range of 1600 and Prevenar is in the range of 3500. वो सब बात करेगा तो सब कम करता है. तो नेबुलाइजर में 2 मॉलिक्यूल अलग-अलग है तो वो मिक्स करके देने का मिक्स कर सकते हो, but I would rather, if it's a Foracort type thing, don't put glycopyridine, give it separately. And one nebulization should last about 5 to 7 minutes. why you told to add water in this? What little bit, sometimes you can add little bit of water. Yeah, sometimes you need not always. You don't advocate acid. Does the length of this tube matter? Not really much. These are standard measurements. But इसका length का कोई standard doesn't matter. I think he's right. You don't really add water. They are पहले it used to come like that. So resistance में तो रहते हैं. हाँ, वो I think आजकल water डालना नहीं. क्या होता है ये जो है ना अपना छोटा वाला मशीन है ना, ये बड़ा ट्यूब रहता है ना, पेशेंट को थोड़ा उतना जाता नहीं है.
नहीं तो इतना बड़ा नहीं रहना चाहिए, सादा स्टैंडर्ड रहना चाहिए। ये इलाज देते हैं। जनरली ये रहता है, डीविस का लो या कोई भी अच्छा कंपनी का लो, तो इंडियन मत लो खाली, है वो बहुत ही बेकार रहता है। एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चन अबाउट अस्थमा? आप कुछ पूछने वाले थे सर, आप कुछ पूछने वाले थे? So like हाँ बोलो। pediatrics में normally we see pediatrician using Ipravent. I will say the brand name Ipravent, Aslin, and Budicat. So how to go about for GPs like to treat any? So that is duolin. Ipravent and salbutamol is duolin. So हाँ, so you give salbutamol. You can give. You need not. If it is an asthma, you need not give Ipravent. You can just give salbutamol, Livolin alone. okay. Livolin puff you can repeat many times till it becomes better, and then you can add a little bit of steroid in a Budicat. Ipravent is not required, but if you have already with you Duolin, you can give it that. In acute, I'm talking about acute case की बात. हाँ. Yeah, what happens is usually you give Foracort or whatever in 2 doses, and in between, if the child, as he says, if the patient gets a still breathlessness, you can add plain Livolin. Livolin is a Plain Saba. Livolin, as he says, is for relief. It's called a relief. Reliever. These are called as smart treatment, maintenance and reliever therapy. What is the maintenance generally? Again, depends on the molecule. Now, if it's a single, if it was in one puff. If it's like Foracort, they have got Synco breath. Suppose you start with 400 micrograms twice a day, thrice a day. As he said, patient अच्छा हो गया, remission में आया, make it 200 milligram once a day. Or even switch over to the Vilantrol, which is really a once a day therapy. But do not stop it. And yoga सब is important and not to smoke. हाँ भाई तुम लोग अस्थमा है तो कोई स्मोक भी मत करो। हाँ बैक तो लिखकर हम लोग तो बाकी देते थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। अभी मेरे को समझा, सब लोग ऐसा मुंह पे मार के अंदर खींच लेते हैं, दवा उन्हें रहता ही नहीं था। नहीं आप तो ये ईएनटी वाला भी अच्छा सिखाया नहीं। और मैंने कल वो ग्रुप में डाला, अब सब लोग ये स्कैनर पे जाओगे, इफ यू स्कैन दिस इट विल टेक यू डायरेक्टली आपका पेशेंट को और आपको भी ऑन टू द फुल डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स, सब डिवाइसेस। आई थिंक ब्रीथ इजी ना, ब्रीथ फ्री पूरा। दिस पीपल आर रियली बहुत कुछ कर दिया। ही इज कंप्लीटली राइट। You don't require to admit asthma patient nowadays. Very rarely you require to admit. You can manage 90% at home. Status asthmatic is not there. It is very rare. But it is less common. वो तो सब जगह रहेगा. Because when you are nebulizing and you can repeat nebulizer after 15 People are buying. minutes, if the patient Yeah, is not you keep on responding. repeating. Nebulization you should not repeat immediately, but you wait for 15-20 minutes. If the, not having patients like 15-20 years के बहुत 150, 120 patients हो गया. Exceptions are there, एक दो थोड़ा जन है. But otherwise what happens is these patients are important because you can get them again and again. वो patient को आपको बुलाना आसान है, easy है, and you are justified in calling again. And otherwise क्या रहता है, एक बार वो patient consultant के पास गया तो consultant उसको बुलाता रहता है, patient आपके पास for lifetime नहीं आता है. So at least simple cases, new cases, those who can be managed at home easily, at least उतने को हम लोगों को control करना चाहिए. At least that is the purpose as far as this today's talk is concerned. I am not going to talk on injectables, the little hi-fi insulins and all, because first we should get comfortable with oral. Patient है ना, बोलते मेरे को नहीं चाहिए, you know, patient आता है साहब नहीं चाहिए. So as such we don't, the patient also doesn't want insulin, and now we have got drugs where you can avoid insulin in a majority of the patient. 90% even up to 95% patient को without insulin कर सकते हैं, provided we are having good knowledge. तो अभी basic knowledge about diabetes तो clear होना चाहिए. So today I felt that we'll just talk about oral drugs little bit and get hands on कि क्या हम लोग को use करना चाहिए, क्या नहीं use करना चाहिए. ठीक है, I'll manage. ठीक है. So हाँ
एक लाइट बंद कर दे वाला। तो नाउ द होल आइडिया इज कि वी शुड ट्राई टू मैं चाहता हूं कि थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए सो दैट वी आर कंफर्टेबल कि हाँ हम लोगों को ये करने का है। When to suspect diabetes? When do you think diabetes पेशेंट को हो सकता है? ये कैसे कभी करेगा? पेशेंट आता है तो हम लोग को कब लगना चाहिए कि डायबिटीज हो सकता है? बोलो। वेट लॉस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ, एक्सेसिव यूरिन, पॉलीयूरिया, फंगल इन्फेक्शन। सी दिस इज ब्यूटीफुल। क्या रहता है डायबिटीज में ना, कॉमन इन्फेक्शन है ना उसको जल्दी होता है, तो फंगल इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता है। जिसको फंगल इन्फेक्शन हो गया ना तो थिंक कि इसको डायबिटीज हो सकता है। वेरी एक्सेलेंट। और कौन सा केसेस है? हाँ, नॉन हीलिंग अल्सर। सी दिस इज अनदर थिंग। पेशेंट को 2-4 दिन में ठीक होना चाहिए, इसको 10 दिन लग गया, अभी भी बराबर नहीं है। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन व्हेन यू सस्पेक्ट डायबिटीज। एनी अदर प्लेस? हाँ, कौन सा? सी पॉलीडिप्सिया, प्यास बहुत लगता है, पानी ज्यादा पीते हैं, पेशाब ज्यादा होता है, दैट इज अनदर थिंग। सो सिम्टम, बट वीकनेस, वेट लॉस, वीकनेस, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, टायर्डनेस, तो उसके लिए रहता है। सी देयर आर 2 कैटेगरीज। एक तो क्या सिम्टम्स होता है, दूसरा है टेंडेंसी। सो ओबेसिटी, ओबेसिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मेनी इलनेसेस। हाइपरटेंशन में ओबेसिटी करेगा, डायबिटीज में ओबेसिटी होगा, अभी आपने सुना बॉस को अस्थमा में ओबेसिटी होएगा। तो ओबेसिटी अभी क्या है, ईएनटी में भी ये ओबेसिटी होगा, कोई भी डिपार्टमेंट में ले ओबेसिटी। तो पेशेंट अगर बहुत ओबेस है ना तो वी मस्ट नाउ थिंक ऑफ लाइक दैट। फैमिली हिस्ट्री, उसको ना घर में मेरे भाई को है, मेरे पास, सो अगर भाई बहन को है ना तो चांसेस आर वेरी हाई, बट अगर खाली एक पेरेंट को है देन इट इज ओनली 50% चांस, बट अगर दोनों पेरेंट्स को है तो उसको 75% चांस है। बट इट मे नॉट हैपन अर्ली, बट यू हैव टू बी गार्डेड। मतलब तुम्हारे घर में किसको डायबिटीज है क्या? वो बोलेगा हाँ सर मेरे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, दैट फैमिली हिस्ट्री इज अगेन एन इंडिकेशन कि उसको सोचना चाहिए हम लोग। एंड देयर आर अदर थिंग्स लाइक उन लोगों को ना अभी क्या आजकल हाइपरलाइपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड ज्यादा है, तो उन लोग को भी टेंडेंसी है डायबिटीज होने का। इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। लाइक डायबिटीज में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरलाइपिडेमिया होता है, तो उनको डायबिटीज होने का चांस बहुत हाई है। तो उन लोगों को दूसरा बीमारी है, देन थिंक ऑफ डायबिटीज। ओबेसिटी है, थिंक ऑफ डायबिटीज। फैमिली हिस्ट्री है, थिंक। फीमेल्स को पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये अगर उसको पीसीओएस है, कोई भी रीजन, दैट लेडी हैज, दैट गर्ल हैज कम फॉर इनफर्टिलिटी और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल, और उनका हम लोग ने सोनोग्राफी किया और पॉलीसिस्टिक निकला, तो उसको डायबिटीज होने का भी चांस है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मतलब दीज आर कैटेगरीज वेयर द सिम्टम्स आर नॉट देयर येट, वी हैव अ chance of diagnosing it. So that's why we must have a list of, I thought just we will have go through it. So especially even gestational diabetes. Now if a female had gestational diabetes means जब वो प्रेग्नेंट थी ना, उसका शुगर थोड़ा हाई हुआ, प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हो गया, बट ये जो नॉर्मल है ना, कई साल के बाद इट विल बिकम डायबिटीज। सो these females are prone to diabetes, that we have to keep in mind. तो ये जो हिस्ट्री है ना, these are equally important other than symptoms. Symptoms are there. Now especially fungal infection in males is present as balanitis. Okay, many times you get a patient, he wants only treatment for balanitis, and वो टाइम पे हम लोग भी खाली लोकल ट्रीटमेंट दे देते हैं। We should not do that. हम लोगों को ना शुगर चेक करा के आ जाओ करने का। 99% में 90% बोला, 99% चांस है कि उसको डायबिटीज होएगा। Why? क्यों ऐसा हम लोग सोचते हैं डायबिटीज होएगा उसको? क्या रहता है इन डायबिटीज, यूरिन में शुगर जाता है और यूरिन का ड्रॉप उधर रह जाता है, और वो ड्रॉप इज फुल ऑफ शुगर एंड देयरफॉर दे विल गेट फंगल इन्फेक्शन। यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली इन वजाइना, in vaginal candidiasis, वो leukorrhea है, it's a very common thing. Sometimes, but for females, when they see candidiasis, no, that is the sign. And
जैसे बोला फंगल इन्फेक्शन इवन इन बॉडी एक्सटेंसिव हो गया, थोड़ा बहुत है ठीक है, यू नो वी हैव अ क्लाइमेट विच इज यू नो लाइक प्री इट्स टेंडेंसी टुवर्ड्स हैविंग फंगल इन्फेक्शन। हम लोग को स्वेटिंग बहुत होता है, बॉम्बे में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत आता है, तो थोड़ा फंगल होने, लेकिन उसको वाइड स्प्रेड फंगल इन्फेक्शन है, इधर भी है, इधर भी है, बैक पे भी है, देन थिंक ऑफ डायबिटीज। सो दीज आर थिंग्स विच यू नो शुड मेक यू थिंक सस्पेक्ट डायबिटीज। नाउ आपने सोचा कि उसको डायबिटीज है, तो डायग्नोस कैसे करेंगे उसको? हाउ विल यू डायग्नोस? तो हाउ विल यू डायग्नोस डायबिटीज? डायबिटीज कैसे डायग्नोस करने का? डायबिटीज को ना जो हम लोग क्या ना HbA1c के ऊपर जाते थे कि अभी आजकल बहुत फैशन हो गया HbA1c का। HbA1c इज नॉट फॉर डायग्नोसिस। देयर इज वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड, वी शुड डू ब्लड शुगर फास्टिंग पोस्टप्रांडियल, दैट विल because HbA1c is an average one, plus its accuracy is not there. अभी आपको मेडिसिन जब शुरू करना है ना, you must know उसको खाली फास्टिंग हाई है, खाली पोस्टप्रांडियल हाई है, दोनों हाई है, कितना हाई है। So if you have an exact figure of what is the sugar level fasting and postprandial, you will be able to manage that patient better. So HbA1c is for monitoring. अभी एक बार डायबिटीज डायग्नोस हो गया, बोलता मैं दवा बराबर लेता हूं, you suspect that patient is not on proper medication, or you have given him long term medication, he is coming after 4 months, how he has been performing, and then you do HbA1c, then it is a good guide. But for diagnosis, fasting and postprandial is important. Okay, fasting कितना होना चाहिए? मोर देन 120। ओके, अभी क्या रहता है, जितने भी जगह जाएंगे ना सब कंफ्यूज, सर 110 है, थोड़ा कई लैब में ना 110 भी रेड में देंगे, तो यू आर नॉट ओनली पेशेंट इज गोइंग टू कम, जो भी चीज रेड में आएगा ना या डार्क में आएगा ना, पेशेंट सर मेरा रिपोर्ट बराबर नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वेदर इट इज नॉर्मल और नॉट नॉर्मल। बिकॉज क्या रहता है, अभी SGOT SGPT देखते हैं 52, सर मेरा लिवर खराब हो गया, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि SGPT SGOT 52 has got no meaning compared to clinical। उसका क्लिनिकल पिक्चर देखो, ही रेल एंड हार्टी, वो खा भी रहे अच्छा है, एंड मेनी टाइम वो अल्कोहल भी नहीं पीता है, तो पेशेंट बोलेगा साहब मैं तो दारू भी नहीं पीता है, और फिर मेरा SGPT 42 है। सो डोंट गो बाय दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ यूनिवर्सल थिंग, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कंपनी लोग, फार्मा पीपल एवरीवेयर, ब्लड प्रेशर डायबिटीज, उन लोग है ना नॉर्मल को लो करता है, सो दैट मोर पीपल आर टेकिंग मेडिकेशन। वी हैव टू बी गाइडेड। सी दिस, दैट्स व्हाई व्हाट व्हेन वी स्पीक, वी शुड स्पीक irrespective of which pharma is supporting which person, that is not important. What we are important is कि पेशेंट के लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, और वही हम लोगों को सीखना चाहिए। सो पोस्टप्रांडियल मोर देन 200। अभी ये क्या रहता है, पोस्टप्रांडियल 180 आ गया ना तो ज्यादा है, हम लोग वो सोचते हैं बिकॉज रेड में आएगा, एंड हम लोग को भी सोचा है 150 के ऊपर होएगा तो ज्यादा, बट इट इज प्री डायबिटिक। Okay, so that means now we are now clear, everybody, सब लोग uniformly है, fasting more than 120 and postprandial more than 200. Okay, so this is a clarity will give us you know scope कि हाँ बाबा अभी उसको warn कर सकते हैं, अभी patient का postprandial 180 है 190 है, देखो तुम हो सकता है तुम अगर डाइट कंट्रोल करेगा, अच्छा करेगा, तो तुम डायबिटीज का मेडिसिन नहीं लेना है, तुमको हो सकता है। सिमिलरली HbA1c का भी वैल्यूज वी शुड नो। सो एनी वैल्यू अबव 6.5 इज डायबिटीज। ओके, अनकंट्रोल्ड मीन्स अभी क्या रहता है, नाउ पेशेंट को डायबिटीज हो गया एंड उसका मॉनिटरिंग चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है, एंड पेशेंट ने 5 साल से दवा ले रहा है, तो उसका HbA1c is important, because then how is maintained, then it should be। Now what is important is if the patient is young, then you have to tend towards 6.5, but if the patient is aged, patient is 70 65, आजकल क्या you will have patients up to 80-85। So today practice has changed. No? Don't think that patient above 70 हो गया बस हो गया। Now we are going to have lot of patients in geriatrics who are going to come between 70 and 85. So you have to understand in these patients HbA1c 7 patient 45 40 50 young, हाँ 60। मेरे को क्या रहता है कि पेशेंट को the diet should be more rigid, because the long-term diabetes effects will be seen in this patient.
लॉन्ग टर्म डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है? नेफ्रोपैथी, वेरी गुड, रेटाइनोपैथी एंड न्यूरोपैथी, these are 3 कॉमन वन। तो क्या करने का, जब भी डायबिटीज का पेशेंट रहेगा ना, साल में एक बार उसको आंख चेक कराने का। और सिम्टम्स में मैंने बोलने को भूल गया, ब्लरिंग ऑफ विजन, सडनली पेशेंट को थोड़ा ब्लरिंग था, उसको या मेरा चश्मे का नंबर है ना बहुत जल्दी बढ़ गया, शुगर इज वन ऑफ देम, ओके। तो उसको ठीक था, नेवर था, बट उसका नंबर -2 से -3.5 हो गया 6 महीने में। तो दैट मीन्स यू ट्राई टू सी शुगर, व्हेन द शुगर, बट डोंट गिव हिम अ न्यू नंबर, you control the sugar. Sometimes when the sugar is controlled, the patient may get back that vision. Okay, so this, don't be in a hurry कि अभी तुमने नंबर चेंज किया, नया नंबर डालो। No, if it is diabetic, newly diagnosed, control his sugar, his number may come back. तो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए, only we can guide the patient. You understand? So therefore, HbA1c is important from that point of view. And once in a year, आँख चेक कराना बहुत जरूरी है। And kidneys का, now in our practice, we are going to see lot of chronic renal failures. So sometime later, we will also have a session on how to manage this chronic renal failure. क्या होता है? अभी ये जो consultant के पास जाते हैं, they will see only once in 3 months. So if you are knowing that patient, वो 3 महीना किसके पास जाएगा? Will come to you only. So we must also be well aware. So some other time we will talk on how to handle these chronic, because these patients are going to come to us, and slowly we have to be, because these treatment का जो है ना, these parameters were not taught to us. हमको सिखाया ही नहीं था. So it's not that you don't know because your knowledge is less, but they were not there at that point of time. So new things have come. So we will talk on that. Okay. So one is fasting sugar, postprandial sugar, उसमें डायग्नोस हुआ, HbA1c फॉर मॉनिटरिंग। बट कभी कभी एक कंसल्टेंट के पास जाएंगे ना, दीज आर न्यू केसेस, सी पेप्टाइड लेवल्स। नाउ दिस सी पेप्टाइड लेवल हम लोग को मालूम होना चाहिए। सी वी मे डू इट, वी मे नॉट डू इट, बट वी मस्ट नो व्हाट इज सी पेप्टाइड लेवल। नाउ व्हाट हैपेंस इन द बॉडी ना, जब भी सी इंसुलिन किधर से सी पेप्टाइड से बनता है, सी पेप्टाइड गेट्स कन्वर्टेड टू इंसुलिन। तो अभी अगर इंसुलिन पहले ना, इंसुलिन का लेवल पता करने का, लैबोरेटरीज वर नॉट ट्रेन्ड, यू नो, लाइक वी वर नॉट हैविंग सो मच गुड क्वालिटी लैबोरेटरीज वेयर इंसुलिन कुड बी स्टडीड। नाउ वी हैव इंसुलिन, बट सी पेप्टाइड इज चीपर एंड इजियर ऑल्सो। 12 आवर्स फास्टिंग करके तो सी पेप्टाइड से मालूम पड़ता है कि उसके बॉडी में इंसुलिन है कि नहीं है। इफ द सी पेप्टाइड लेवल इज लो, दैट मीन्स हिज इंसुलिन इज लो। Sometimes what happens in adults में C peptide level में come little high, तो मतलब क्या हुआ उसको, क्या मतलब हुआ उसका, इंसुलिन हाई है लेकिन उसको डायबिटीज है, तो क्या हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो जस्ट व्हाट इज इंसुलिन, तो ये बेसिक है, बट क्या होगा मालूम होने से, नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल नो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। So there are people who are deficient in insulin, उनको इंसुलिन कम है, then you have to give them drugs to raise the level of insulin, whichever way. But there are people, especially obese people, जो मोटे लोग हैं ना, उन लोगों को इंसुलिन रहता है लेकिन फिर भी डायबिटीज होता है, बिकॉज देयर इंसुलिन गेट्स डिपॉजिटेड इन द फैट सेल्स। तो जो फैट सेल्स में वो इंसुलिन मिलता नहीं है यूज करने के लिए, बट इंसुलिन रहता है। सो दीज आर द things which you will come to know with C peptide level. And sometimes there are people who will get, मेरे को ना बहुत हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आता है, अरे वो नॉर्मल है, वो डायबिटिक नहीं है, उसको हाइपोग्लाइसेमिया आ रहा है, सो यू आर वंडरिंग व्हाट इट इज। देन इन दीज वेरी फ्यू सिलेक्टेड occasional patient, then this may be a C peptide level you do is high, that is called a insulinoma, means there's a tumor in the pancreas where you can pick it up. Because of that tumor, the insulin is getting secreted a lot, and because it is getting secreted in spurts, na, they get suddenly hypoglycemia. This is not very common, this is not a, but नॉलेज होना अच्छा रहता है। कभी कभी यू विल गेट पीपल, मेरे को लो शुगर होता है, बट यू नो नाउडेज, यू नो पहले पेशेंट आता था, कुछ बोलता था, हम लोग विश्वास नहीं करते थे, वी वुड नॉट बिलीव द पेशेंट। नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, 99% यू मस्ट बिलीव द पेशेंट, because patient is now very alert, very informed. He may not be educated, remember this, ये education में मत जाओ, informed में जाओ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबके पास है, सो वो इंफॉर्मेशन है उसके पास। सो देयरफॉर
to try to understand कि patient जो बोल रहे हैं सही बोल सकता है. Okay, this is something. So C peptide levels हो गया, and even there's a some condition called LADA. LADA क्या होता है? This is one condition which you just have a good knowledge about it. It's called latent autoimmune diabetes in adults. मतलब क्या होता है? There is one type 1 diabetes, correct? Type 1 diabetes में क्या होता है? बच्चे को ही diabetes हो जाता है in बचपन because of whatever. It is sometimes genetic in nature. So they require insulin lifelong. So that diabetes is diagnosed in childhood only. Sometimes at 2 years, sometimes at 5 years, variable. But sometimes at young age, no, it is they are normal, and at a young age, then they start developing diabetes. This is because there is a autoimmune system where autoantibodies होते हैं, and there the insulin gets depleted very fast. So this is the one condition seen on young where you may see diabetes, and then the reason is अरे क्या है ये, because most of the time हम लोग है ना डायबिटीज 40 साल के बाद होता है, 35 साल के बाद होता है. अभी अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहता तो इवन अर्ली वी सी इन 30s also, but sometimes when it occurs much early, this is one of the conditions. Then the C peptide levels are done, and the C peptide levels are very low. That means उसका इंसुलिन ही नहीं हो रहा है, तो that's why the patient is getting diabetes. So this C peptide level is important in पर्टिकुलर कैटेगरीज. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, बिकॉज क्या सी पेप्टाइड के बारे में हम लोग ज्यादा यूजुअली सुनता नहीं है, उसका ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, एंड इवन इन कॉन्फ्रेंसेज वी ओनली टॉक ऑफ ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल, HbA1c. जस्ट आई वांटेड टू फील कि ये थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है. ओके. And in chronic renal failure, now as I said, chronic renal failure mein there are a lot of things which we ought to know, and that is like these people have if they are on oral hypoglycemic agent, the dose has to be lowered because they will require lower dose because of the delayed metabolism. So the insulin also persists in the level for long. So when we do C-peptide in chronic renal failure, again the level is high. So in chronic renal failure, most of the medicines का dose है ना कम करना पड़ता है. Okay. So now when we come to treatment, see now you are suspected diabetes, उन्होंने diagnose कर लिया. अभी क्या आएगा साहब, treatment दो. So now you have to be sure कि you want to give a treatment. So what is the treatment? Type 1 आएगा तो insulin. So that is out of our purview. वो तो क्या है, pediatric diabetologists are today there. So basically even diabetologists ने pediatric diabetologists treat that. Of course some of the diabetologists do that. But if it is type 2, that means which is we always see in adults, maturity onset diabetes, then you have to start with lifestyle modification. Now, when you get a patient, you have to tell them about lifestyle modification. You have to tell them about smoking, you have to tell them about alcohol, then you have to tell them about weight reduction, and you have to tell them about their diet, then you have to tell them about exercise. तो ये सब बोलने के लिए you must have knowledge. मैं क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं? The most common question is that, and क्या नहीं खाने का सर साहब, वो डॉक्टर के पास गया, अच्छा नहीं है, वो बोला ये मत खाओ, वो मत खाओ, and then you feel ये मेरे से चला जाएगा दूसरे डॉक्टर के पास, नहीं नहीं खा सकते हैं. Don't get into this, please. Why? Because non-drinkers are more strict. Non-drinkers. No, I will come to you. Non-drinkers are more strict. वो जो वेजिटेरियंस है ना, उन लोग है ना, जब पेशेंट गेट सिक ना, बोला मीट नहीं खाने का, चिकन नहीं खाने का. लॉट ऑफ चिकन बोले पेशेंट, क्या साहब मैं चिकन खाऊं? बोला क्यों? तो डॉक्टर ने बोला चिकन नहीं खाने का. सो आई वांट टू नो व्हाट इज योर टेक, वेदर यू फील अल्कोहल शुड बी अलाउड और नॉट. व्हाट इज दैट? हर अल्कोहलिक का मॉडरेट. Michael wants to say something, yeah? Huh? Again, occasion will happen. Let's say, he's put on the spot. In a week. 3 times a week. No, 3 times a week. You are allowed to break your energy. The whole day you try to break your energy, whatever you are gaining. So it is written in the medicine book which we read, actually Davidson and all, where it is written daily intake of 20 ml of alcohol. It is going to harm after 20 years. Okay, so at that age of 20 years, diabetes.
Okay. See, what happens is we must understand the personality of the patient. Huh? Okay, some patients are, very strict about their diet. Some patients are not strict about their diet. और ना ऐसा generalize कुछ भी नहीं करने का. Medicine generalization खत्म हो गया अभी. Now you have to be specific. ये patient को क्या चाहिए वो करो. Then only you will be successful. Don't by generalization. इसको मेरे को जैसे बोला डेविडसन ने बोला है, वो अमेरिकन को तो रोज शाम को चाहिए. That is a different thing. And the climate is like that. -20, -30. हम लोग कभी देखते हैं -20, -30 देखा. 3 months or 4 months in a year, they have -20 degrees temperature. So that is not possible here. But what I am saying is that we should go by the patient. If the patient is a intelligent patient and is a patient who will listen to us, disciplined patient है, तो ही उसको थोड़ा alcohol allow करने का once a week or maximum once a week is good enough. But otherwise try to say no smoking and no alcohol as much. once a week नहीं रहता, हाँ? चालू हो जाता है. Huh? ऊपर चालू हो जाता है. Correct. That's what I'm saying. So because when you say once a week, it once a week becomes twice a week becomes 4 times in a week. So as far as our advice is concerned, we should try to listen, because there is a interaction. Alcohol also increases the action of the drugs and interferes with the diabetic control. So this is one thing which you must have. And nowadays what is important is the monitoring. Monitoring सिखाने का. Now how you saw the peak flow meter. What is the peak flow meter is for monitoring. Monitoring by every patient. Now diabetes हो गया ना, तो monitoring सिखाने का. पेशेंट को बोला मशीन ले लो. ओके, देन ग्लूकोमीटर लेगा. डोंट वरी अबाउट योर प्रैक्टिस. आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल गाइड ऑल दीज थिंग्स, योर प्रैक्टिस विल इंक्रीज. पेशेंट अपना रिपोर्ट तुमको ही दिखाएगा. He will not go to the diabetologist. So therefore, you have to say, have a monitor, you try to. And nowadays, there are apps, as you saw just now for asthma. ये diabetes के लिए भी apps है. So, but they charge. Now, this is companies. There are some companies, if you get complimentary. Otherwise, there are apps. They charge for 3 months, 6 months, and they guide you on diet and exercise. तो वो सब कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर छोड़ देने का. दैट इज देयर. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू टेल देम टू ट्राई टू मॉनिटर देयर शुगर. एंड मॉनिटरिंग हाउ ऑफन, मतलब क्या कितना करने का, डिपेंडिंग. सी दोज हु आर ऑन इंसुलिन ना, they have to do monitoring daily. Okay, so they are not in our category because we are not monitoring insulin. We are not. But if you get a patient on insulin who is on insulin, you must tell them to monitor daily. Why daily? Why daily? Because the insulin dose is dependent on his reading, on her reading, his or her reading. तो जो अगर उसका उस दिन शुगर कम है तो फिर कम देने का है, और ज्यादा है तो देने का. So monitoring for insulin patients is different altogether, but you must know. Okay, but who are on oral hypoglycemic agents, तो उनको monitoring करना चाहिए. Yes? No? Yes. करना चाहिए. तो कैसे monitoring करेंगे? सब रोज लेने का नहीं, फिर कभी लेने का, बोलो. ये नसीब इज क्लियर. रोज नहीं लेने का. हाँ? Every 3 months and then if feeling sick. ओके, ही सेज एवरी 3 months मॉनिटरिंग. एवरी 3 months खुद का मॉनिटरिंग करने का, या तुम बहुत बीमार है तो करने का. एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? नाउ केतन बोल, किस कभी मॉनिटरिंग करने का बोल. कदम कभी Every 15 days. Every day. Say- You have to do in the morning, and then you have to do in the afternoon. Both lunch and you have to do at the night. see, excellent. Now Ketan, excellent. See, we all know the thing, but we are little hesitant. See, क्या रहता है ना, उन लोगों को रोज मॉनिटरिंग का जरूरत नहीं है. डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कितना कंट्रोल है नहीं है, बट उनको once a week or maximum twice a week बस है. But what you have to tell them is to write down, and secondly do it at different times. Sometimes they do fasting, sometimes after lunch, sometimes after dinner, so that when they come to you, you can alter the medication accordingly. As you saw ना, peak flow meter में क्या बोला था, अगर आपको morning में and or if the symptoms are more in the night, then you have to increase the dose in night. Early morning again increase the dose in the day. तो बोलते हैं मैं ऑफिस में जाता हूँ, मेरे को तकलीफ है, then the morning doses to be increased. So similarly, sugar levels also need to be monitored so that they uniform the whole day.
ओके तो उनको फास्टिंग पोस्टप्रांडियल आफ्टर डिनर कभी कभी करने का. सो ऑलवेज थिंक ऑफ मॉनिटरिंग एज फार एज पेशेंट इज कंसर्न. उनको बोलो वंस इन अ वीक इज गुड बट डिफरेंट टाइमिंग करने का. सी वंस इन 3 months what he is saying is correct is for the lab. Okay, and once in 4 months is the minimum means earlier than that is not indicated for HbA1c. So if you are doing HbA1c once in 4 months is the earlier. इससे ज्यादा जल्दी करने से ना alteration नहीं होगा. So your medicine if you are changing that may not get the desired effect, you know. So he is doing well but it may not reflect in HbA1c because you are doing it too early. So don't do too early. Okay, 4 months is the minimum and maximum you said twice a minimum तो 2 साल में 2 बार HbA1c करने का. Okay, so this part also we are little clear. Okay, ठीक है. And now I come to the last part of fasting. अभी क्या रहता है? Now we must know is diabetes reversible. हम लोग ने सुना होगा ना अभी बहुत सब लोग बोला yes it is reversible. It is reversible. अभी हम लोगों का ना scientifically proven हो गया है. So now sometimes lot of doctors revolted and you know even diabetologists were against 5 years back. That diabetes किधर reversible है? This is like that. But now almost like that in the sense not for all. Not for all. You cannot say. It is only for people who are very, very disciplined. See, now I will give example, live example. Now, a lot of these Jainis, now they do fasting. And we have seen that they lose lot of weight and their fasting is a phenomenal fasting. You know, उन लोगों का fasting कितना दिन का होता है? So, any idea? 7 days, 7 days. 1 hour, 1 महीना, 1.5 महीना. They do alternate day for few months. They do without every day for one month. तो उन लोग का 30-40 दिन बिना खाली पानी के. Then they do for 1 week without पानी. You know their capacities are increased. So these are the people. Now what has happened? Non-Jainis also. Anybody, all of us, any one of us can do this fasting and get their sugars in control. Can do. Intermittent fasting is now very, very popular. हम लोग का एक lecture भी हुआ था that speaker had come from Pune, if you remember. He's become a worldwide authority now because he started intermittent fasting and he wrote a book, huh? Dikshit, yes. Well, Dikshit is now a world figure because now it is accepted that it has a lot of benefit. So patient बोलता है, but intermittent fasting का you must have good knowledge. See, you should advise with a good knowledge. तो थोड़ा fasting के बारे में, if a patient is saying नहीं साहब मेरे को diabetes को गोली नहीं खाने का है, okay, you want to try a chance, you can. You don't say patient को नहीं हो सकता है. If the patient बहुत motivated है, patient is extremely determined, but if they fail, then you tell them that अगर नहीं होएगा तुमसे तो फिर हम लोग को दवा चालू करना पड़ेगा. So you can give, but that is also at a particular level. Okay, but if they are determined now, we have now documented people who have come off insulin also because of fasting. So there is a big role of fasting, but a lot of knowledge is required. You have to be, आपको पूरा knowledge fasting के बारे में होना जरूरी है. Okay, so this is basic. मतलब this is before we start the medicines. Okay, now we must know something about medicines. कौन सा medicine लेने का? Not right. सब लोग को हम लोग को सिखाएगा मेटफॉर्मिन से शुरू करने का. करेक्ट है. सबको बोला है कि मेटफॉर्मिन से शुरू करो. करेक्ट है. पर अब भी क्या है? नाउ यू हैव अ चॉइस. You have a choice. You can start with SGLT2 or metformin. Okay, so but metformin still is a good drug, and I'm sure all of you are knowing about metformin. Metformin can be started from low dose to high dose. Okay, and but what is the bad side effect of metformin? Anybody who knows any side effect of metformin? Yeah. Weight loss. It loss of appetite. No, sir. Actually, it stops the production of beta cells of. No, not stop. Huh? Nephrotoxic. See, huh? Lactic acidosis. Lactic acidosis is one of the very good. Lactic acidosis is one of the dangerous side effects of metformin. Not a common side effect, but lactic acidosis, especially if they are having, something like diarrhea or electrolyte imbalance, then the chance is that time you have to tell them to stop. If the patient is extremely sick, then we tell them to be off the drug so that this side effect of lactic acidosis with metformin. But most common side effect of metformin is anorexia.
nausea, okay, anorexia. Now what happens is in obese people, you want them to have anorexia. You want them, साहब मेरे को तो बहुत भूख लगता है. See, this is the reason they are fat. You see a fat fellow इधर, तुम बहुत खाता है, तो you don't, बहुत सर डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको कैसे मालूम मेरे को खाना बहुत पसंद है. See, the idea is he's obese because उसको खाना पसंद है, but then you tell him like that, तुमको खाना बहुत पसंद है, तुम्हारा भूख कम कर. So metformin is very good. Now what happens? Metformin is available in immediate release and sustained release. Okay. Now the patient says साहब metformin लिया मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, and you feel metformin is good for that patient, is obese, he has good levels of insulin, but it is not acting. So then you can give sustained release. When you give sustained release metformin, the side effects are less. Okay, nausea एकदम कम है, because it gradually goes into the system. So because of that, the nausea is less. So if you have a patient who is not willing to take metformin, or he takes metformin, साहब ये दवा क्या दिया है, मेरे को तो बहुत उल्टी होता है, मेरे को भूख बिल्कुल नहीं लगता है, मुंह एकदम कड़ा, तो give them sustained release. Okay, sustained release metformin is available in 500, 850, 2 strength. You can start with once a day, you can make it twice a day, not more than twice a day. But plain metformin you can give once, twice, thrice. Okay, this is basic for every one of us, all on this part. Okay, basic है. तो उसके बाद में SGLT2. Why SGLT2 is the new, relatively new drug, but it is a wonderful drug. Okay, and it is very very good, and very few contraindications are there. You know, ऐसा किसको नहीं दे सकता है, ऐसा बहुत कम जन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं नहीं दे सकते. ठीक है. See, if what happens in SGLT2, all of us should be knowing. SGLT2 से क्या होता है, जो हमारा शुगर है वो यूरिन में निकल जाता है. That is the purpose of that. So what will happen, because of that loss of sugar, patients lose weight also. So weight loss भी हो जाता है and sugar भी control होता है, which is something which every patient or every diabetic wants. Most of the diabetic patients will be obese. Few will not be obese. And secondly, it has got cardiovascular and renal benefit. Means क्या रहता है, heart के ऊपर भी load कम करता है. It improves the performance of the heart, and even in kidneys ना, not in chronic renal failure, but those diabetes में क्या होता है, किडनी को तो अफेक्ट होता ही होता है. हर एक डायबिटीज का ना किडनी अफेक्ट हो रहा है, स्लोली हो रहा है. किसी को ज्यादा होता है अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years every diabetic will have a renal damage. So that we have to be prepared right from the beginning. We cannot tell the patient कि तुमको 15 साल के बाद 20 साल तुम्हारा किडनी चला जाएगा. You will change the doctor. दूसरा डॉक्टर बोलेगा नहीं हम लोग देखेंगे, और 20 साल किसने देखा अभी. So don't get into that, but mentally be prepared that we have to protect their kidney so that instead of 20 years, if it can be pushed to 30 years, nothing like it. Okay, so that is an important thing. And which are these drugs which are in SGLT2? DAPA, EMPA, and canagliflozin. Now, why I want to talk about these drugs is because you must know one drug. ये जीपी को ना 10 ड्रग का जरूरत ही नहीं है. You know, we are ये भी मालूम होना चाहिए. No. Take care of one drug, good drug. Now what had happened, ये सब drugs का नाम patent था. Patent होने के कारण they were very expensive. Now dapagliflozin, if you will see now, is now available at 6 rupees, 7 rupees per day. But when they were patent, it was 60 to 70 rupees per day. तो अभी 70 रुपये per day वाला 3,000, 4,000 साहब एक दवा का. So we could not write that drug. They were available abroad in foreign countries, but they were patent. Now the patent is gone for both DAPA and empagliflozin. But what I feel, you learn only one drug. Dapagliflozin, उसका कितना डोज है? 5 मिलीग्राम एंड 10 मिलीग्राम, दो ही स्ट्रेंथ आता है. 5 मिलीग्राम देने का शुरू में आपको उसको टॉलरेट होता है, अगर उसको एंड 10 मिलीग्राम. Put them on 10 मिलीग्राम. अरे क्या पेशेंट डॉक्टर साहब कोई सस्ता दवा 10 मिलीग्राम का ले, उसको आधा गोली दो. Don't do that, because see what will happen is when you give a drug and you give in the correct dosage and the correct manner, no, the effect will be what you require. उसको थोड़ा ड्रग दिया बट लेवल ही नहीं उतना कम हुआ, then you are not getting the desired effect. So do not give half treatment. Give treatment if you are giving proper treatment. देने का सही देने का, so that they will have the effect which you want. हाँ साहब अभी मेरा ग्लूकोज भी कम हो गया, मेरा वजन भी कम हो गया, like that. Okay, now only thing is in chronic renal failure and in
dehydrated patient. So now when they take the SGL2, you have to see that they are hydrated well. पानी ज़्यादा पीने का, पेशाब ज़्यादा होएगा. And you give them in the daytime. Don't give in the night time because you don't want them to urinate more at night. Their sleep will get disturbed. You know. So therefore, SGLT2 का ना अपने को ध्यान रखने का. So we can start with metformin or we can start with SGLT2 or we can start with both also. Okay, combination. So see, the beauty about all these drugs in diabetes today is you can have multiple drugs acting in different levels at the same time for the same patient. So our sugar levels and requirement of insulin becomes very much negligible. Okay, so now this is another thing is both. Usually all prescriptions whenever considered this before starting the anti-diabetic, they prescribe PPIs and pan 40 or something metformin. When they start metformin, they write compulsory mandatory. ये दवा आपको लेना ही लेना है. So your side there is no mention of PPIs. See, what happens is now most of these drugs do not act with, do not interact with PPIs. Do not interact. The level at the absorption is at the GI level. They do not require acid for their digestion. So it is not an acidic medium. So they don't get influenced by PPI. Yes or no? PPI has no role as far as the improving the benefit of either metformin or SGLT2 or any of these oral hypoglycemia. But huh? I'll just tell you a couple of things unrelated to diabetes. There are two documented side effects of long-term use of PPI. Yeah. One is a kidney damage, and one is a more prone to the inflammation. So even in the acute, when we use acute situation, we don't give injection pan, we give injection rank tank. So PPIs, if they are being used indiscriminately, as you are saying, it's not right. It's completely spot on. There is nothing to do with diabetes tablets. Because they say bol diya. No. So okay. So what will happen is, if you want to give PPI, you should not give more than a week, 15 days. If you and definitely not more than 1 month. Now what happens? Patient बोलते हैं मैं दवा बंद करता हूँ. See, now I'll finish this question. तो ये हम लोग को सबको patient आते हैं. साहब दवा बंद करता हूँ. 10 years. हाँ, बिल्कुल दवा बंद. Correct. See. नहीं करेक्ट. मैं क्या बोलता हूँ, वो पेशेंट क्या बोलता है, साहब मैं ये दवा बंद करता हूँ, मेरे को तकलीफ शुरू हो, ये मेरा दवा मत बंद करो. व्हाट इज इट? द क्वेश्चन इज लाइक दैट. सो व्हाट वी हैव टू टेल देम कि ये दवाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसका साइड इफेक्ट है. यू पुट देम ऑन रेनिटेडीन और फेमोटेडीन. नाउ रेनिटेडीन एंड फेमोटेडीन आर टोटली सेफ फॉर मंथ्स एंड ईयर्स. Okay, so now what dose you should use is again one thing. What happens is हम लोग है ना GP है ना 150 mg, famotidine 20 mg. ऐसा मत करो. 300 mg, ranitidine 300 mg, famotidine 40 mg. Now don't use pan 40. Now don't. मैंने वो DSR नहीं दिया, मैंने pan 40. You are doing the same thing. See, why I'm telling you, क्योंकि हम लोग है ना थोड़ा सा साइको ना जीपीस का थोड़ा अलग ही है. तो I feel we should change our thought process totally. We are giving the same drug and we think we are giving them benefit. No, it's not like that. You have to give ranitidine 300 milligram or famotidine 40 milligram, and both these drugs can be given 2 times also and without any side effect, and they are damn cheap. In fact, the patient will be very happy. बोल तुम 1 हफ्ता ट्राई करो, उसके बाद देखो साइड इफेक्ट ही नहीं है. और मैं बोलता हूँ 20 साल का. आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट, साहब इसका कोई साइड इफेक्ट है, बोला 20 साल तक नहीं कुछ होएगा, उसके बाद देखिएगा. सो पेशेंट हैज टू बी टोल्ड, you have to tell that. Okay, so now we come to another drug which is very good is DPP4 inhibitor. Now what happens is, अभी हम लोग नाम सुनते हैं क्या है क्या नहीं. Now what happens is this drug, when we eat food, the food goes in our intestine. Intestine में ना एक हार्मोन निकलता है. That hormone, it goes and stimulates pancreas to secrete insulin. Okay, that hormone is called incretin. Okay, now what happens is this incretin has a very short life. Okay, so now what happens is वो निकलता है, थोड़ा देर pancreas को stimulate करता है and बंद हो जाता है. So what will happen is this DPP4 inhibitors,
they inhibit the metabolism of incretin. तो incretin जो हार्मोन निकलता है, it increases, it duration increases. So action increases, insulin is produced more, and it suppresses glucagon. Glucagon is known to increase the sugar level. Insulin is supposed to reduce the sugar level, okay, in blood. So it helps in increasing insulin and reducing glucagon. So this is another way of acting. So why you are adding a medicine which has got not the same action? अभी क्या रहता है, सल्फोनाइल यूरिया सपोज हम लोग पहले यूज करते थे, एक किया तो दूसरा सल्फोनाइल यूरिया उसका नहीं यूज कर सकते. Once you are using one SGLT2 and metformin, you cannot use another SGLT2. Okay, so you have to use another molecule which acts in a different way and brings the sugar down. Okay, again this DPP4 में we have linagliptin, sitagliptin, teneligliptin, saxagliptin. ये नाम तुम लोग ने सब ने सुना होगा. Teneligliptin was the first gliptin which India produced, and therefore you know whenever you will see multinational companies, they will not talk of teneligliptin. Even studies will not show, because they never wanted India to come out with a new molecule and patent. And Glenmark brought out and he didn't patent it. बोला जिसको produce करना है, it was very cheap. And linagliptin was costing 65 rupees one tablet, and today it is costing only 6 rupees. Okay, so now the patent is gone. So now today we have linagliptin and sitagliptin. Saxagliptin का अभी भी patent चालू है. Maybe next 1 or 2 years it will get over. So these two drugs, linagliptin and sitagliptin, are very effective. Linagliptin, even in failure, renal failure, maybe you don't have to modify the dose. So if you want to remember 1 or 2 molecule, linagliptin and sitagliptin effective है and very effective and not very expensive. All patients can afford this. Okay. Now what I am trying to tell you is these 3 drugs, metformin, SGLT2 and gliptin, they don't cause severe hypoglycemia. तो क्या होएगा ना, तुम लोग का पेशेंट ले रहा है, आया नहीं, बहुत दिन तक नहीं आया, still you will be safe, you know, you will not be unsafe. Okay, there is one. Sorry? Should be given before food or after food or with food? See, what happens is metformin should be given. What happens is most of these drugs take little half an hour for the action to take. So most of these medicines, just when you're sitting for food or you're taking a, you take all medication. That is the safest way for all the drugs. Even for insulin, लोग खाना टेबल पे रखो और फिर इंसुलिन लो. नहीं, तुम्हारा खाना बन रहा नहीं, वो for some reason वो खाना आया नहीं, वही टाइम में आपस में झगड़ा हो गया. We have had such incident. They took the insulin, there was a fight in the house, and that first the food never came, and patient has gone into hypoglycemia. So we must be very particular. Patient को बोलने का, खाना शुरू करेगा तो टेबल पे आएगा तभी लेने का. Okay, so the dose also is very simple, and these are all once a day. Is once a day. Gliptins are also once a day. So you know once a day, एक सुबह को लो, एक दोपहर को लो. So you are giving them at both after day. Metformin you can give once a day, twice a day or thrice a day, depending on what you want. Immediate release है तो 3 times दे सकता है. Sustained release है 1 time is enough or 2 times is enough. Okay, so this is as far as a simple medicine, and अपने को, and most of them will do very well. Okay. Now sulfonylurea. Sulfonylurea होता हाँ, तो अभी क्या है, तो vildagliptin है ना, अभी now it is becoming. See, because what has happened is it's very cheap, and now what has happened is the medicines which are very cheap are now going out of line. There is no buyer in that. There is no big pharmas involved. So now all the pharmas have gone into vildagliptin. So another vildagliptin is again being promoted for all of us. So what happens is you need 1 or 2 drugs which are very powerful. See, you have to be effective because you are going to fight with a diabetologist. Competition अभी diabetologist के साथ है. You are not fighting an ordinary person. So you take up drugs which are very good. Don't take up drugs which are got थोड़ा सा ऐसा है. अभी metformin ले हो, लेकिन metformin के ऊपर don't put your pillar on a metformin. Metformin is one of the drugs. But your main drugs are going to be SGLT2, gliptins, which is, and then linagliptin and sitagliptin. Even the diabetologist will not change your prescription. अगर आप पर डोज दे रहे हैं ना, वो भी नहीं चेंज करेगा, बोले ये मेडिसिन सही है, बराबर. ओके, नाउ sulfonylureas are the only ones which act directly on the pancreas. They stimulate and squeeze the pancreas to produce insulin. So now
what had happened is that पहले क्या ना, this was the one of the oldest drugs, तो हम लोग सल्फोनाइल यूरिया ही करते थे. I have written लास्ट में उसका डोज भी नहीं लिखा है, ग्लिबेनक्लामाइड. डाउनिल होता था, that was the first thing. डाउनिल सेमी-डाउनिल अभी भी मिलता है. It is not being promoted even by the company because उसमें price control है. They cannot increase the price. There is no profit in डाउनिल. It costs so less. So, but what happens is we don't use डाउनिल now. Anybody know why we are not using डाउनिल? हाँ? हाइपोग्लाइसीमिया. क्यों हाइपोग्लाइसीमिया होता है मालूम नहीं. एनीबॉडी विल से व्हाई डाउनिल हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है? सी द एक्शन ड्यूरेशन ऑफ ग्लिबेनक्लामाइड इज 36 आवर्स. वो एक गोली 1.5 दिन चलता है, दूसरा गोली फिर 3 दिन होएगा. यू इट इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. यू अंडरस्टैंड? सो देयरफॉर यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस ड्रग कैन बी गिवन बट ओनली सिलेक्टिवली. वो बहुत मेडिसिन खाया, बहुत दवाई खाया एंड स्टिल नॉट गेटिंग कंट्रोल, एंड देन यू कैन यूज दिस ड्रग, बट नॉट फॉर अस. Guys, don't get into troubled waters because you must be very sure you can handle these patients. Okay, so we must stick to glimepiride, gliclazide, and glipizide. See, these are 3 very common drugs and very easy to monitor. And what happens? Glimepiride, we are all using. Glimi hai, jo bhi naam lene ka hai. Don't want to use any name, but you can use from 0.5. I have written 1 to 4, but 0.5 भी available हो गया. So sometimes the metformin से नहीं कंट्रोल हो रहा है, SGLT डाला, फिर भी थोड़ा ज्यादा है, अपने ये डाला हम लोग ने, स्टिल वी वांट DPP-4 डालने के बाद भी है तो 0.5 भी दे सकते हैं, एंड once a day भी दे सकते हैं, twice a day भी दे सकते हैं. See, this action of glimepiride is 24 hours, huh? But what happens is when we eat, no, then it has a peak action and then a sustained action. So what happens is then the sustained action is little less, and then when you're eating dinner, that action may not be adequate to control the night count. So that's why many times in glimepiride we use dose. Similarly in gliclazide and glipizide. In gliclazide and glipizide, na, sustained release are there. See, that is the advantage of that. And when you use sustained release, you can give once a day. So this is, but you have to study that medicine, you know, that tablet का थोड़ा knowledge होना चाहिए, because the strength is not difficult. All these medicines are easily available. Only thing is you थोड़ा सा उसके बारे में knowledge रखो so that you don't make a mistake in it. Because glimepiride हम लोग बहुत use करते हैं, but nowadays, you know, the gliclazide has come into form. 40 milligram twice a day, 40 milligram 3 times a day, up to maximum 320. But when you are giving high dose, you give only 2 doses divided. Sustained release भी आता है 30 and 60. There are only 2 strains of sustained release, and once a day you can make it. When you use once a day and you want to use high dose, split it into, okay, because then the chances of hypoglycemia are also reduced. You understand? So these are very, very good drugs, but as I said, these come little later by. Okay. So very often we see the patients who on gliclazide, there comes the report comes a large post-mortem. There is always very high actually. Your gliclazide, what is very high? When patients on gliclazide, we see the fasting blood sugar is getting controlled. But if you see PLBS in most of the patients, the PLBS there is a larger difference. Fasting is around 120, and if you see PLBS, it is around 240, 250. I have seen that particularly this molecule. Is that true? See, this molecule is basically to increase the level of insulin. Okay, these 3 molecules increase. The capacity to increase insulin is limited. Okay, on all these patients because they are diabetic for a long period of time. उनको आज नहीं है, 5 साल से है, 5 साल तो दवाई नहीं लिया, पहले बोले दवाई. See, most of the diabetics now, when they are diagnosed, they must be having diabetes for quite some time. वो लोग लेते नहीं है, and then by the time you think अभी डायबिटीज है, actually उसको 5 साल से था. So the insulin, pancreas का क्या है, उसको stimulate करके वो थक जाता है. There is a limit to which pancreas can produce insulin. So that's why these sulfonyl ureas have also a limit. So that's why we have to understand whether this dose is enough or not. But if it is not, in oral hypoglycemic agents, these medicines which you have to take orally, you have to monitor postprandial. Okay, but when you are taking insulin now, you have to monitor the fasting. You understand? ये एक बहुत जरूरी है कि मैं इंसुलिन लेता हूं तो उन लोगों को फास्टिंग मॉनिटर करो.
एंड जब भी लोग ओरल ले रहे हैं पोस्ट प्रेंडियल, सी दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स विच यू विल रिक्वायर एवरी डे. ओके, ठीक है. सो नाउ आई फिनिश विद द लिस्ट फर्स्ट एंड देन आई गो टू क्विकली टू 2-3 केसेस. ओके, थालिडोजोन, पायोग्लिटाजोन तो हम लोग ने सबने नाम सुना है. नाउ द व्हाट हैपेंस इन पायोग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन इज द ओनली मेडिसिन व्हिच इंक्रीजेस द वेट ऑफ द पेशेंट. Okay, so now you, and which other medicine in diabetes increases the weight? Anybody? इंसुलिन. ओके, इंसुलिन इंक्रीजेस द वेट. डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है, वेट लॉस होता है. डायबिटीज कंट्रोल होता है, वेट गेन होता है. बट पायोग्लिटाजोन इज ओनली वन ऑफ द ओरल ड्रग वेयर द वेट गेन इज देयर. सो पेशेंट ऑलरेडी ओबेस है ना, पायोग्लिटाजोन पे नहीं डालने का. ओके, सी दीज आर स्मॉल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड द डोज इज 7.5 milligram once a day, 7.5 milligram twice a day. Now what happens in pioglitazone? Pioglitazone improves the action of insulin and it is a very good drug for young patients because it is the only medicine which preserves the beta cells of pancreas. Okay, beta cell को protection देने वाला एक ही ड्रग है, वो पायोग्लिटाजोन है. तो अभी जब वो 65 हो गया, 70 हो गया, वो पैंक्रियास का बीटा सेल्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया. तो डोंट use pioglitazone in very elderly patient. And side effect क्या है? Weight gain and fluid collection. तो उन लोगों को CCF, उन लोगों को pleural effusion, ये सब होने का चांस रहता है. तो which is also more in elderly patients. So in elderly patients, try to not use pioglitazone, but younger patients you can. बीटा सेल को प्रोटेक्ट करता है, इंसुलिन का एक्शन को इंप्रूव करता है, एंड यू कैन यूज इट 7.5 once a day और even 15 milligram once a day is very good. So that way, you know. Okay, and carbos, polycarbos and ecacarbos, we have all heard of that. इसका एक्शन क्या है? ये कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है. कई लोगों को जैसे पोस्टप्रेंडियल बहुत ज्यादा हो जाता है. नाउ दिस इज द कैंडिडेट हु रिक्वायर्स वोग्लिबोज और ए कार्बोज. पहले ना ए कार्बोज आया था तो बहुत ए कार्बोज, बट नाउ वोग्लिबोज हैज कम, ए कार्बोज हैज गॉन डाउन बिकॉज द व्हाट हैपेंस, द बेटर ड्रग कम्स. सो यूज ओनली वन ड्रग बट यूज अ बेटर ड्रग. तुम लोग को 4 ड्रग यूज करने का कोई जरूरत ही नहीं है. यूज नो, सी यू हैव टू, वी हैव अ स्पेक्ट्रम, इतनी बीमारियों के बारे में सोचने हैं. सो लेट अस टेक टू फ्यू ड्रग्स इन ईच कैटेगरी. ओके, सो वोग्लिबोज 2.3. And खाने से पहले, so you know what happens is this has to be eaten just before food, 10 minutes, 15 minutes, because with food, yeah, 10 minutes, because what happens is this action is in the intestine, it reduces, कुछ ज्यादा नहीं करता है, but it delays the absorption of carbohydrates. Now what happens, the carbohydrates get started digested all across the GI tract. Now it delays. So what happens is the postprandial peak is not like this, the postprandial peak is like this. Okay, so the peak comes little down because of Oglima. Baki uska action on insulin and all, nothing is there. So therefore, it is not a good, powerful drug, but in certain patient. Now, what is the side effect you must know? इसमें ना bloating, gas बहुत होता है. तो carbohydrates है ना, उसके कारण है ना, ये बहुत होता है, gas बहुत होता है, bloating होता है. So, MA, so therefore, you have to be very careful. But when we give Oglibos, you have to, patient comes with so a lot of gases, then we will stop this medication also. Okay? Burn can be patient. This is one of the effect of the medicine. So if they are going to, थोड़ा दिन खाते रहेंगे तो यूज हो जाएगा, वैसे नहीं रहेगा. see, if the patient, it all depends on the mentality of the patient. Patient is willing to tolerate. देखो तुम्हारे को फायदा होता है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है. See, you have to sometimes slight stools are slightly less, slightly bulky. So all this you explain to the patient. If he accepts it, fine. But otherwise, you have to be careful that it is this drug induced. क्या है ना, medicine नहीं देना चालू करने का. See, what happens when you know the side effect, you can stop the medicine. Side effect बंद हो जाएगा. अभी क्या है? Now we come to 2-3 cases. We'll just see who has benefited from this talk. 42 years obese female patient, sugar 180 and postprandial 290. No history of testing, newly diagnosed. कैसे करने का? क्या करने का? अभी उसको क्या देने का? Yeah. Main thing is dietary changes. Super. Walk. And then start with either metformin or dapaprin. Very good. Excellent. Anybody else wants to say something? Yeah. So this is excellent. One was, you know, what happens is, see, we must advise that patients on diet count to बिना diet
कोई भी डायबिटीज के पेशेंट को घर नहीं भेजने का। और नेक्स्ट टाइम उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है ना, नहीं करता है, तुम एक्सरसाइज नहीं करता है, वो बोलेगा डॉक्टर तुम दवा लेते ठीक नहीं होता है, दवा ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करता है, नो, एंड अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करेगा मेरे को दवा बढ़ाना पड़ेगा। सी यू मस्ट नो वेयर यू हैव टू स्ट्रेस सो दैट यू नो द पेशेंट बिकम मोर एंड मोर कंप्लायंट. Okay, that is very important. Okay, so as she said, rightly said, we give them only mild मेडिसिन. न्यूली डायग्नोज को ना ज्यादा एग्रेसिव मत हो. क्या होता है ना, अभी उनको मालूम है मेरे को डायबिटीज हो गया, वो सब घर में सबको तेरे को डायबिटीज है, तेरे को डायबिटीज, एंड दे फॉर द फर्स्ट 6 months 1 year 2 years ना एवरीबडी इन द हाउस विल बी सेइंग तुम ये क्यों खा रहे हैं, तुम मिठाई खा रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन देयर, यू नो, द कंट्रोल विल बी वेरी गुड. सो यू बी लिटिल माइल्ड ऑन द ट्रीटमेंट, स्पेशली न्यूली डायग्नोज न्यू पेशेंट्स एंड लाइक दैट, यू नो, बिकॉज क्या रहता है हम लोग सीधा उसको सल्फोनाइल दे देंगे and they will become hypoglycemic and they'll go to another doctor. See what happens is one bad incident is going to become little difficult for us to control. That is why we have to be more careful about hypoglycemia than hyperglycemia. Okay. हाँ, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा. अरे दिया ना, मेटफॉर्मिन दिया, मेटफॉर्मिन से अच्छा और क्या है. फिर तेरे को पायोग्लूटाथोन ऐड करना है, पायोग्लूटाथोन क्या है बोलते, पायोग्लूटाथोन. सी ओबेस पेशेंट को पायोग्लूटाथोन नहीं करने का. देखो आई वांटेड टू सी, यू नो, ओबेस पेशेंट डोंट गिव पायोग्लूटाथोन. इंक्रीज द वेट. 61-year-old फीमेल फॉर शुगर 130, पोस्टपेंडल 200, वेरी फॉन्ड ऑफ. ये 61 ईयर बोलता मेरे को मीठा तो मांगता है डॉक्टर बहुत है, यू नीड, हाउ विल यू प्रोसीड. इसको अभी क्या देने का है? हाँ, वॉगली बोस, वेरी गुड. See, why I'll tell you now, correct. See, I want to tell you, you must understand the patient. Don't understand the disease. Understand the patient. ये ना जीपी लोग है ना, क्या है तुम्हारा शुगर कितना है, ये उसको, पेशेंट कौन है, क्या है 61-year-old, उसको अभी तक तो डायबिटीज था नहीं. तो अभी तुम देखो 61 तो ऑलरेडी बिना डायबिटीज के गया, तो ही इज लाइकली टू गेट अंडर कंट्रोल वेरी फास्ट. डोंट गेट, सी शी 100% राइट. इज अ डायबिटोलॉजिस्ट एक्चुअली, हम लोग लेक्चर में आ गए हैं. तो व्हाट हैपेंस इज दैट you don't have to give him medicine, you have to convince him, बाबा तुम ऐसा करो. और as he says उसको बोगली बोझ दो, because Michael says बिना दवाई के वो धारावी में पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता है. हाँ, so basically don't be in a hurry to treat the figures. Don't go treat the figures, treat the patient. That is very very important, and it is the bottom line for all of us. Okay. Then only, see, if क्या रहता है, sometimes the patients don't listen. वो कुछ भी करो नहीं listen करेंगे. So after 6 months, then don't wait. See, you have to go on calling them 1 month या 2 month के बाद देखेंगे, 1-2 महीने का. But if after 6 months still they are not willing to change, you will have to put them on medication. Okay. So now we come to, see, this is a 24-year-old male patient, comes with history of weight loss since 3-4 months, started working since 1 year, नया जॉब मिला था, and feels tired after work, occasional fever, no other complaint, एक्स-रे चेस्ट नॉर्मल. बोला अरे यार तेरा वेट लॉस है, कॉक्स हो सकता है, नहीं था, सीवीसी नॉर्मल. शुगर किया तो 160, फास्टिंग, पोस्टपेंडल 220. क्या देने का इसको, बोलो, कम ऑन. यस, बोलो जी. Lifestyle modification. Lifestyle modification, very good. One. I will start with you. Liptin. Okay. See now, see the patient. कौन सा patient है? क्या है? कितना? Young patient. He's a लाडा. ये तो patient ही नहीं है. This patient is for diabetologist. He's a 24-year-old. He's a very early onset of diabetes. He's a late onset of type 1. Okay. वो young person को diabetes आ गया है ना, he has to go on insulin. He has to be on insulin. Okay, see why I'm telling you that patient is important. Now, when you are at 61, you are not willing to give diabetes. That similarly, 24, 21, 22, these are all LADA. The patient, if you
less than 22 to diabetes. ये क्या है? This is a variable. You know, he may be having since 22, but he might not have come to you. See, but what happens is when it is such an early stage, no, your batti should rise that he is not a normal. See, maturity onset diabetes is diabetes 2. When it was called, it was a maturity onset. Where is the maturity here? So you have to consider this as a warning sign that he is a very early diabetic and he is fasting itself is high, because then it has nothing to do. His insulin levels are falling very rapidly. Okay, this is one of the things which we must keep in mind. Okay, so now one of the last patients, 50-year-old female diabetic, since 7 years regular medicine, taking sugar. See this, and HbA1c 1%. She's already taking metformin BD, glimepiride 1 BD, teneligliptin, statin, calcium, multivitamin. क्या देने का है? राजू, माइकल बोलो, कम ऑन, नवकेतन। हाँ, 5 मिनट में बंद हो जाएगा, 5 मिनट में बोलो। एनीबॉडी? हाँ, DAPA. See, what happens is, correct, you can add DAPA, but the doses are low. उसके डोजेस देखो ना, 1 milligram, 500 milligram. तो सेम मेडिसिन यू कैन इंक्रीज द डोज, नो, वो उनको तुम सूट करता है, एंड यू कैन ऐड dapagliflozin, दैट इज ट्रू, बट द डोसेस आर ऑन द लोअर साइड. तुमको ज्यादा गुण है. व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वो बहुत डॉक्टर के पास गया था, ले रहा था, पेशेंट इज ओके, HbA1c 9%, नॉट सो बैड. So what I am trying to say, the patient is already stabilized on glimepiride. You can make it 2 and 1. You can make it metformin 500 at 850 BD. See, these are doses which are very low. Why I am trying to tell you is, when the patient is not controlled and lower doses, increase the dose. See, this is what happens. You know, this is very important. कि you must know that there is a range ना. अभी tell me certain हम लोग देते हैं, 20 से स्टार्ट करता है, कोई 40 से स्टार्ट करता है, but if the patient is still borderline, you can go up to 80 mg. So there is a range. Amlodipine 2.5 or 500. So therefore, most important in these cases is very low dose. If they are not controlled, increase the dose a little bit. Okay. Now, 50-year-old patient gave me a fever with body ache. See, this is very important. वो patient आता है, साहब मेरे को बुखार था, खांसी था, and then you treat the patient. A patient is a new patient, and you treat him. Patient 2 दिन में ठीक. Patient is एकदम impressed, you know, very impressed. And now he says, sir, come later. He says, sir, I have got diabetes and hypertension, and I'm taking glimepiride 2 mg BD. 100. DAPA S is dapagliflozin with sitagliptin. Okay, and tell me statin and rovastatin. अभी मेरे को सर आप देखो, because I'm so happy when I came to you few days back. मेरा fever था, body ache था, and you did very well. तो मैं दवाई में बहुत डॉक्टर्स हुआ, but your treatment I liked it very much. So now he comes to you. Now what will you do in such a case? Sugar is 180. 220. Sugar is 180 220. हाँ, ये report. अभी का जो रिपोर्ट है ये. Yeah, latest. Anybody? So now रोजास्टन 40 वो बंदा है ना, वो पोचेला बंदा था. See, I told you ना, he is not your regular patient. He came, he got impressed with you because you treated his fever. Within 2 days you got all right. So 40, you give in only Huh? patients. You have to reduce. no, patients are, because they are impressed with you, no. So this patient is not for us. This patient is for the diabetologist. See, why I'm telling you, all patients हम लोग नहीं treat करने का है. So I wanted to end one of the last, one last. So is that all patients are not ours. You must understand, if the patient is taking adequate drugs, lot of things, and he is impressed with you, that is not enough for us to fall into the trap. Patient कभी-कभी खुश होता है. ये उम्मीद नहीं था. नहीं, ये उम्मीद होना ही चाहिए. ये उम्मीद होना ही चाहिए. वापस रहेगा. मेरे क्लिनिक का है. So okay, last patient, last.
Last, I actually थोड़ा सा overshoot कर गया. Sorry for that. Last patient. This is a patient who is regularly coming to me. He came and on phone. मेरे को बोला and many of these patients take treatment on phone. He gave me a phone. मेरे को fever है, cough है, cold है. मैं क्या लेने का? मैं बोला देख तेरे को viral fever है, तो दवाई लेगा ठीक हो जाएगा. आने का जरूरत नहीं है. Patient stays in Chembur. So then after 2 days he called again. Sir मेरा fever ठीक हो गया, लेकिन मेरे को बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता है. I don't like to eat anything. I have severe anorexia. तो बोला ठीक है यार B complex ले ले ठीक हो जाएगा. And we put him on B complex. Then after 2 days his wife called and says, अरे डॉक्टर ये क्या हो गया है, मेरा हस्बैंड है ना सडनली है ना ऐसे खड़ा हो जाता है, इधर बैठता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है ये वो. तो दैट इज देन आई सेड यू कम टू माय क्लिनिक से. तो देखा तो उसको डायबिटीज था, उसने अपना मेडिसिन ले रहा था अपना बराबर से. ही वाज टेकिंग रेगुलर medicine, and during this period he went into hypoglycemia because of anorexia, severe anorexia. So patients who are on diabetes treatment, if they fall sick, be careful. Hypoglycemia is going to occur if you don't tell them, warn them. खाओ कुछ ना कुछ खाओ, नहीं खाता है तो मेडिसिन बंद कर दो. Okay, thank you very much. So I hope we had some good time and thank you. If you go around, if you're diabetic, you have to wear a card around you. If I am found unconscious, etc., it's probably because I'm Glucose देने का. I should